The topic is definitely inspection, search and seizure, including detention of vehicles and GST. And to speak on the topic, we have two very learned speakers. Advocate Sandip and Advocate Mittal sir. We heard him so many times before. जितनी बार भी सुनने लगे थोड़ा और सुन ले, थोड़ा और सुन ले, दिल भरता नहीं होगा. We must have lots of issues, lots of questions about the inspection of certain seizures, including details of vehicles. So, Choraria and Mittal are here, and we can ask as many questions as you want. With this brief, I will now request Navin Chandani to please come forward and offer a bouquet to the Mittal sir. I will request Advocate Prasad to please come forward and offer a bouquet to Advocate Sandip. Now, just co-chairing our GST that is committee. I will say I want to introduce the topic. Thank you very much. I'm audible. Good evening, everyone. It's an honor to introduce two scholars of our profession. So, first, I will the speakers will be introduced, but to take a kind of advanced derivation. Both Sandip sir and Mittal sir is, mentor and motivator for practitioner like us. I remember my Sandip sir guiding me for my first matter of High Court, and he's always been here. And specifically with the knowledge, with the technical inputs which we gather, what we learn with skill set is very important, and we can always see and learn from Mittal sir that being bold and being on spots, derivation matters at all. Having said that, the topic is inspection, search and seizure. Technically, the speakers will either 67, 68, elevate. But please understand is facing a lot of search matters, a lot of seizure matters. You're good getting intercepted somewhere. Your registered case is getting inspected all of a sudden. Is it legal? It is not legal. What are the powers? What are the powers of an officer? What are the rights of a taxpayer? This is very important to understand. We have got a terminology called reason to believe. We have got a terminology that INS 01 will be issued. Hence, it's time that we go deep dive form even of INS 01. We have to deep dive the options, the checklist of INS 01. We have to interpret the OR on written in INS 01. Right? For all these things, we have two solvers, and let's welcome them with a great round of applause. Hello. For our place is introducing the speakers. Yeah. Can't fail it. Proceedings have been done by I'm only going to property ja ase one million name first file I'm going to read of Mr. Mittal ji. Mittal ji is a chartered accountant turned advocate, law graduates from the Delhi University and a practicing advocate, particularly in indirect taxes in High Court and Supreme Court. Co-chairman of the National Council on Indirect Taxes. The Supreme Court Bar Association has honored Mr. Mittal for 9 consecutive years
And also in the year 2016 to 18 on the occasions of law and constitution. He has authored several books. Some of them are law, practice and procedures of the service tax, introduction to GST, handbook on equalization of levy, handbook of GST law. I think these are the least mentioned. There are many more things which are not written into it. We welcome you, sir, for the commission. And the second profile I am going to read is Sandip Choraria. He is a commerce graduate having a degree in law, have been practicing since 1990 in the field of taxes. Proprietor of Matrix Law Offices. Main area of practicing indirect taxation coming back service tax customs and excise. He regularly appears before the Honorable Calcutta High Court, West Bengal, taxes and tribunals, and also appears before the Ranchi and Guwahati High Court. He was the designated senior standing counsel for the Ministry of Finance, CBIC, for a brief period of time, whereof he handled matters as tax, criminal law, and arbitration. He also associated with many professional organizations and had delivered many lectures both in the pre and post GST periods. I think this is the GST is the current burning topics or the subjects. So I'm a direct practitioner, but this is everybody has to learn, and because we all have to carry on the art professions. We also welcome you, Sandip. Thank you so much for being here. President, so that we can. Thank you. So we have kept the flow in that Advocate Sandip Choraria will take us through the deliberation, and then Advocate J.K. Mittal sir will add on to that. So what is the difference? Good afternoon, everybody. Am I audible? Yeah. Virtual audience can type yes if I am audible. Thank you for thank you to DTPA, the president, the secretary, and all the members who have gathered over here. Few months back, most probably not months, few in about 20-25 days back, DS Dia called me up and he made me join this a group of very eminent professional practicing in GST, saying that we need to move forward with something new, so that in a bouquet we can give something to the audience in Calcutta. So many of them, Abhishek, and then Dada was over there also. So we thought that why not we merge some very burning topics, 4 or 5, 5 or 6 topics are before you. And after a sincere hard work, we have arrived on the second day of this session. So now my session is inspection, search and seizure under goods and service tax. And with my permission from my senior, Mr. J.K. Mittal sir, should I start? Yes. Thank you, sir. Now, agenda of the day is introduction to search and seizure. On topic, deposition of tax and collection of post-dated check, which is a very grave issue. Thereafter, seizure of cash during search. This happens. Attachment of bank account. This also happens. Handling inspection, search and seizure. Reasons to believe, which Abhishek just now said. And upon summons. This is upon 67. So
The statutory provision, most of us, 5 साल हो गए GST को, तो most of us know it very well. The statutory provision whereof it says that a taxable person most probably it is in section 2 subsection 107. Taxable persons includes both whether registered or liable to be registered. Whether has suppressed any taxable transaction relating to supply of goods or service or both, or the stock of goods in hand or as claim input and credit in excess of its entitlement under this act, or has indulged in contravention of any of the provision of this act or the rule made thereunder to evade tax under this act. 167 1B starts with any person is defined in section 2 subsection 84 most probably. So all persons are coming under the purview of that. इसमें transporters having godown में रखा हुआ सामान ये सब cover आता है. Now, without the permission of the Joint Commissioner, a search and seizure cannot take place. Sub 67(1) में, where the proper officer not below the rank of the Joint Commissioner has a reason to be. That means, first of all, the sanction has to be from the hierarchy not below the rank of a Joint Commissioner, and there has to be a reason to believe. He may authorize in writing any other officer under central tax, that is delegation of the power, which is having under section 67(1), the Joint Commissioner which is having, to inspect any place of business. Place of business is defined under section 2 of the GST Act, of the taxable person or the person engaged in the business of transporting, or the owner or the operator of warehouse or godown or any other place. 285, I said that it is place of business, which includes business जहाँ पर business किया जा रहा है, godown है, सामान रखा जा रहा है, जहाँ पर bill books and accounts रखा जा रहा है, all include place of business. 67(2) again it is very important where the proper officer not below the rank of the Joint Commissioner either pursuant to an inspection carried out under section 1 or otherwise has reasons to believe. This again it is coming down. Section 67(1) maybe it has reasons to believe. Section 67(2) may it is again come down, but there have to be reasons to believe that any goods liable for confiscation or any document or books or things. This is very important. I'll come down to 67(2) later on also. That any goods liable for confiscation things which is in his opinion shall be useful for or relevant to any proceeding under the act are secreted in any place. माने कहीं छुपा के रखा गया है जो कि डिपार्टमेंट को अगर मिलता है तो वो समझ में आता है कि कुछ टैक्स उससे मिलेगा जो कि डिक्लेयर नहीं किया हुआ है, रिटर्न्स में नहीं डिक्लेयर किया है, बुक्स अकाउंट में नहीं डिक्लेयर किया है. He may authorize in writing any other officer of central tax to search or seize. यही से शुरू होता है, search or seize. Or may himself search or seize goods, documents or books or things. Now, reasons to believe it is having a wide connotation. Supreme Court, time and again, this has been tested in many of the cases. High Courts का भी है, although many of the cases has gone to the Supreme Court also. And one of the Supreme Court very leading cases, Shivnath Singh versus ACCR, it is reported in AIA 1971, Supreme Court 2451. It says that the CGST Act 2017 has made it mandatory. It says that the CGST Act, the citation, I think it is in the Supreme Court order that the GST Act 2017 has made it mandatory to have reasons to believe for search and seizure, and the same must be recorded in writing. ये नहीं है कि कुछ भी इच्छा हुआ, कुछ भी सोच लिए कि चले गए. It should not be a fishing and roving inquiry. That is why Supreme Court and all the other courts time and again has said that the reason जो भी है उसका, it should be written in writing by the concerned officer. The Act has also stated that the search and seizure shall be in accordance with section 165 of the CRPC. CRPC search and seizure basically CRPC 165 के से run करता है. This will come down later on also. Now, Supreme Court in this case observed that the word reasons to believe suggested that the belief must be of an honest and reasonable person, and the same has to be based upon reasonable ground. That is why I said that it should not be a fishing and roving inquiry.
कि इच्छा हुआ गए, किसी से भी सुने। क्या होता है कि बंगाल में द स्टेट ऑफिसर कॉल्स इट अ रेकी। रेकी होता है कि दे गो टू द डीलर्स प्लेस ऑफ बिजनेस, दे डू नॉट एंटर इट, दे गो एंड गैदर कलेक्ट इन्फॉर्मेशन। वो लोग कई दिन बाहर में भी बैठे रहते हैं, कई महीना में बैठे रहते हैं। इट हैपेंस टू मेनी ऑफ द क्लाइंट ऑफ माइन ऑल्सो। तो उसके बाद में क्या है कि व्हेन दे आर वेरी श्योर, दे गैदर इन्फॉर्मेशन अकॉर्डिंगली, एंड व्हेन दे आर वेरी श्योर दे कि भाई टैक्सेस इवेशन हो रहा है, देयर आफ्टर दे कम फॉर द सर्च एंड सीजर। Reasons to believe suggest that the belief must be of honest and reasonable person, and the same has to be based upon reasonable grounds, and the officer concerned must act upon direct and circumstantial evidences, but not on mere suspicion, gossip, or rumor. Number two is that further, in Gurmukh Singh case, it was held that the search cannot be based on mere suspicion. A suspicion, I think I've already told it. And as because I'll be running very fast, because my time granted is mostly 40 minutes, and thereafter will be. So I have to cover 56 slides. So I'll be running very fast. Now, some question before the authorities are, कब होता है? माने सीजर कब हो सकता है? ट्रांसफर क्लेम मोर देन एलिजिबल। कहीं पर डॉक्यूमेंटेशन से आपके वैट रिटर्न से दिखा गया है कि ट्रांसफर का जो क्लेम है और जो आप 143 में जो क्लेम करे हो जीएसटी का रिटर्न में आप कुछ ज्यादा लिए हो। क्लेम ऑफ आईटीसी मोर देन जीएसटी 2A। इन दिस केस subsequently there are certain reasons to believe upon which they can come, they can visit your office. Rate of tax charged at the rate of, that is higher rate of, lesser rate of tax charge, whereof under there they have an impression कि इसका जो GST जो goods है वो that is covered under higher rate of tax. Classification, that is branded and unbranded, ये भी थोड़ा सा पीछे चले गया क्योंकि राइस has gone on the background. अभी राइस important नहीं है, but still 74 is still over there. They can do on this also. Suspicion, that is supply of goods without invoice, invoice के बिना अगर supply of goods करते हो तो suspicion, that is undervaluation of sale, अगर undervaluation करते हो तो suspicion कर सकते हैं। Suspicion claim of credit more than eligibility, अगर आप अपना GST 3B में अगर एलिजिबिलिटी से ज्यादा 2B से आप ज्यादा अगर ले रहे हो तो इन दैट केस यू कैन बी विजिटेड बाय द कंसर्न ऑथोरिटीज। नाउ इश्यूज व्हिच वी फेस इज ऑन साइट डिपोजिशन ऑफ जो डिपॉजिट करना पड़ता है टैक्स को। तो क्या होता है कि अंडर कोर्शन मेनी टाइम्स जब आता है तो बोलना प्रैक्टिशनर्स लोग के लिए बहुत इजी रहता है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स नॉर्मली फेस इट, बट वी एडवोकेट वी आर एट द बैकग्राउंड, वी डू नॉट want to face it basically. We say कि आओ भैया कोर्ट में हम लोग देख लेंगे, पर बेसिकली इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि इतना मेंटली इतना कोर्सिव एक्शन का धमकी दिया जाता है कि आप बहुत सा टाइम में क्या हो कि आप टैक्सेस जमा कर देते हो उसी दिन भी। कलेक्शन ऑफ पोस्ट डेटेड चेक, कलेक्शन भी आपको अगर पैसा अगर नहीं रहता है कि कैश अगर नहीं अगर पे कर सकते हो तो देश कि भैया टैक्स यू गिव अस पोस्ट डेटेड चेक, तो उसको हम लोग इनकैश करेंगे। अटैचमेंट ऑफ बैंक अकाउंट सब्सिक्वेंटली 86 में आपको ये 83 में प्रोविजन में आई कम डाउन, एंड सीजर ऑफ कैश, वेदर सीजर ऑफ कैश अंडर द प्रोविजन ऑफ लॉ इज वैलिड और नॉट, इट शुड बी टेस्टेड। So this is our concern, the previous one was their concern. Now recovery of tax 79 बोलता है कि कोई भी अगर डिपार्टमेंट they are to get the taxes, अगर when any amount payable by a person to the government they do not get it तो उसके टाइम में रिकवरी कर सकते हैं। This is simple as it is. तो अब है कि any amount payable by a person, अगर आपके पास अगर नोटिस के बाद में भी आपका टाइम पीरियड ऑफ फाइलिंग अपील अंडर सेक्शन 107 जो when it is over 3+1 month अगर ओवर हो गया तो they can go for a recovery. Normally they do it after 3 months only, but 3+1 month should be the time available. 83 now it is very important, that is provisional attachment. Provisional attachment is a draconian, it is a basically a law which hits us very very badly. कुछ भी होता है तो कुछ भी अंडर सस्पिशन कुछ भी होता है भैया इसका पहले तो उसका आईपीसी रोक दो, कुछ भी नहीं है। आज टुडे देयर वाज अ पानागढ़ से कुछ 2 क्लाइंट आए थे जिसका 60 लाख रुपया रुका हुआ, ठीक है, तो देवर कि सर कुछ तो करने का है, तो भैया कुछ करने का है तो बात तो ठीक है। Let us test this provisional attachment.
where during the pendency of any proceeding under section 62 or 63 or 64 or 67, which we are discussing, or 73 or 74, the commissioner is of the opinion that the commissioner has to be of the opinion that the purpose for the purpose of protecting the interest of the government revenue, it is necessary so to do. He may, by order in writing, attach provisionally any property, including bank accounts belonging to the taxable person, in such manner as will be prescribed. This property, आपका जो cash credit ledger है, that is also this property. It is including the property. Now, dishonor of check, as because I am from a legal background, sir is from a dual background, CA as well as advocate. So, a dishonor of check is 138. Dishonor of check बोलता है कि भैया आप अगर नहीं अगर कैश चेक देते हो किसी को और वो dishonor होता है तो the punishment can extend up to 2 years. 138. This is not relevant for us as because this provision is covered by many judgments of the court. Now, in case of this GST में क्या है कि काफी कुछ judgment इसके ऊपर में आ चुके हैं अभी तक. So one of it is remark क्या है? Can somebody read it? I'm unable to see it. इसमें the practice of collecting post-dated check and the coercion during raids is not permissible. Means of collecting of revenue, particularly when no tax demand has been confirmed or crystallized. 683 is why I said it is a draconian law, is because demand के against में आपका revenue collection कब होता है? When there is a demand upon it. ठीक है? अगर demand अगर नहीं होता है, that means कि भैया हो सकता है नहीं भी हो सकता है. ठीक है? It has to be tested. I can give a reply. A proper reply has to be considered. इसके पहले ही आप provisional attach कर दे दो. तो in this case, Gujarat High Court has come up with an observation कि अगर जब तक demand नहीं होता उसके पहले अगर 83 का अगर provision अगर invoke करते हो, it is not correct as because the demand has not been crystallized. And thereafter, Honorable Gujarat High Court, again in the case of Atul Mittal Private Limited versus State of Gujarat, in that case it went a step further, whereof it says that if the SSC voluntarily gives such checks, in order to avoid harsher measures or provisional attachment of premises, stock or bank account, the action of the authority must fail in such cases. That the court did not support it. Court did not support it कि भाई आप अगर इच्छा से भी अगर आप उस दिन का अगर आप चेक देते हो किसी के पास में अगर विजिट करता है अगर रेड होता है रेड इज आई टेल यू बेसिकली व्हेन आई वाज यंग इन प्रैक्टिस आई डिड नॉट हैव एनी मेंटर आई वाज इंडिपेंडेंट व्हेन आई वाज यंग इन प्रैक्टिस सब कुछ काम करना पड़ता था तो एट मेनी पॉइंट ऑफ टाइम बैक में कोई रेड हो रहा है तो किसी कोई बुला दिया कि भैया उस टाइम में तो क्या कि फीस वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी तो भैया फीस देंगे अच्छा चले जाते हैं चलो भाई मैंने आज का ये है वी शुड नॉट गो ड्यूरिंग द रेड्स तो उस टाइम में भाई ठीक है चलो चले गए तो एट मेनी पॉइंट ऑफ टाइम अंडर कोर्सन मेनी क्लाइंट की भैया इसको सल्टा दीजिए इसको चेक दे दीजिए ये होता था अभी हम लोग ये बोलते हैं कि भैया चेक अगर लेता है तो दे दीजिए आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो बाद में हम लोग देख लेंगे उसको पर हम नहीं जाएंगे आप अपना चेक देना है कैश देना है आज जो भी लेना है उसको देख दीजिए बाद में हम समझ लेंगे तो गुजरात हाई कोर्ट वेंट ऑन फर्दर दे सेड कि भैया उस दिन अगर आप स्वेच्छा से माने अगर इच्छा से भी अगर आप अपना चेक देते हो तो इट इज अगेंस्ट वी डू नॉट सपोर्ट नाउ वैल्यूज इंडस्ट्रीज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया गुजरात हाई कोर्ट 2019 दिस इज अ वेरी गुड जजमेंट आई टेल यू माने इसमें इस जजमेंट को यू जस्ट रीड दिस जजमेंट यू विल फाइंड मेनी ऑफ योर इश्यूज कवर्ड इट इज अ वंडरफुल जजमेंट ये पीपीटी बनाने के टाइम में I had an opportunity to go through this judgment. So I read it twice basically. The order of provisional attachment before and after assessment. The order of provisional attachment before the assessment order is made must be justified if the assessing authority or any other authority empowered in law is of the opinion that it is necessary to protect the interest of revenue. This has to be there in writing कि वो उसको पूरा रिकॉर्ड्स लाना पड़ेगा उसको ये नहीं है कि उनका इच्छा हुआ क्रिप्टिक ऑर्डर पास कर दिया कि आई एम गिविंग एन ऑर्डर टू सीज ये नहीं हो सकता है द ऑर्डर हैज टू बी इन राइटिंग व्हाई वी आर गोइंग फॉर प्रोविजनली अटैचिंग however the substantive
satisfaction should be based on some credible material or information and also should be supported by supervening factors. Material आना चाहिए, नहीं तो वो proceed नहीं कर सकता. If it is not any and every material howsoever vague and infinite or distant, remote or far-reaching, which would warrant the formation of the belief, the power conferred upon the authorities under section 83 of the Act for Provisional Attachment could be termed as a very drastic and far-reaching power. Such powers should be used sparingly and only on substantive weighty grounds and reasons. मतलब कि आपका उतना वजन होना चाहिए, जो ग्राउंड्स वो इसके ऊपर में कर रहा है वो वजन होना चाहिए, नहीं तो वो नहीं कर सकता. Now Vishwanath Realties versus State of Gujarat, here also the opinion formed by the commissioner must be on some tangible material, on objective facts available with the commissioner, such as the past conduct of the dealer or that the dealer is likely to sell his property. ये भी हो सकता है कि भाई अगर किसी को अगर डाउट अगर होता है कि भाई डीलर बेच के भाग जाएगा, तब क्या है कि इन दैट केस दे कैन प्रोसीड विद द प्रोविजनल अटैचमेंट. Now, in this case, the petitioner opposition to the point raised by the department would require a detailed scrutiny and examination of material. What happened in this case was as regards to the dispute was as regards to the classification of the goods. ठीक है, इस क्लासिफिकेशन के अगेंस्ट पे क्या है कि दे विजिटेड, दे हैड अ डिस्प्यूट कि भाई आप जो टैक्स दे रहे हैं, जिस क्लासिफिकेशन अंडर दे रहे हैं, दैट इज नॉट प्रॉपर. That is I'll give the citation subsequently, most probably वो एक लाइन में गड़बड़ हो रहा है. तो मेरे लैपटॉप खोल देना. Remark Flower Mill, this is the citation versus Flower Mill versus State of Gujarat. यहाँ क्या हुआ था कि क्लासिफिकेशन में कोई इशू था, the department went for a raid and subsequently they provisionally attached the bank account of the dealer. Now the dealer came up with before the court, they said कि भैया ये तो क्लासिफिकेशन का इशू है, it needs a lot of investigation और एक्सरसाइज भाई असेसमेंट करो. असेसमेंट करने के बाद में इफ यू थिंक कि भाई ये जस्टिफाइड है कि आपके हिसाब से any issue. The petition opposition to the point raised by the department will require a detailed inquiry and examination of material. Now, to reiterate, I am reading from the middle. To reiterate, when the petitioner's classification on the basis of which the tax has so far been collected cannot be stated to be without any basis, nor it can be stated that the petitioner has no prima facie case. क्योंकि petitioner tax दे रहा है, ठीक है, वो prima facie case नहीं है, वो शुरू में आप नहीं बोल सकते. लड़ो, उसके बाद में देखा जाएगा. And when the assessment proceeding are yet to be completed, resorting to such extreme power of attachment without anything further to suggest that the liability, if ultimately finalized, the petitioner will not pay, would simply not be permissible. Here, the provisional attachment was quashed. Now the thing is कि ये provisional attachment जो section 83 हम लोग थोड़े आगे पढ़े थे, उसके बीच में लिखी कि provisional commissioner is of the opinion. Now, can this power of the commissioner to form an opinion, provisional assessment के provisional attachment के पहले commissioner has to form a power opinion. No, opinion ये क्या delegate किया जा सकता है किसी को, किसी भी authority को कि whether it can be delegated. Now, section 5(3) एकदम नीचे में जो दिया हुआ है सेक्शन 5(3), the commissioner may subject to such condition and limitation as may be specified in this by him delegate his power to any officer who is subordinate to him. ठीक है, this is the provision. Now we see what is the delegation of power 167. The commissioner may by notification direct that subject to such condition if any, as may be specified in the notification. This has to be followed. Notification is very important over here. Any power accessible by any authority or officer under this act may be accessible also by another authority or officer as may be specified in such notification. Now, delegation of power जो है वो next है 168 section 2. ये CGST Act में है पर SGST Act में it is missing. अगर it is SGST Act में क्या है? What is the difference in between? 168(2) is not available in the State Act. It is not available. वहाँ पर 168(2) of the CGST Act says the commissioner or the joint secretary posted in the board may take it. Okay, even the commissioner over here, he does not have the power.
The delegation start from the commissioner who or joint secretary who is posted in the board. Now, similarly, अगर ये देखा जाए आप इसको टेस्ट करो, delegation of power of provisional attachment is under section 63. Okay, I think. अब ये notification एक delegation of power by the commissioner by order, ठीक है? 2 स्लाइड पीछे चलते हैं अगर, तो यहाँ पर बोल रहा है delegation of power has to be specific. Third line देखो, specified in the notification. So can we say this to be a notification? It is not. It cannot be. It is ये अपना ಅದೇ ಬ್ರೋ ಉಷಾ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ದಪ್ಪದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವ ಲಿಫ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್ ಹಾ ಅದೇ ತಗೋ sorry. Now now again I'll come down to various industries versus Union of India, which it is a wonderful development. Here in paragraph 30, it lays down what the CGST Act says. And in 35, paragraph 35 of the judgment, it says, is very important, that in the case in hand, section 83 makes it abundant clear that if the commissioners, let me read it. The comparison of the provision of State Act and the CGST Act would indicate that there is a vast difference between the two. Section 168(2) of the CGST Act clarifies that the commissioner specified in subsection 2 of section 5, that subsection 3 of section 5, shall be the commissioner or joint secretary posted in the board, and such commissioner or joint secretary shall exercise the power specified in the said section with the approval of the board. Thus, the distinguishing feature is that so far as the CGST Act is concerned, the power of delegation under sections 5(3) of the Act therein is with the commissioner in the board and not the commissioner of the central tax. Whereas so far as section 5(3) of the State Act is concerned, the commissioner would be the commissioner of the State Act. If the provision of the CGST Act would have been applicable on the fact of the present case, then there would have been difficult at all. There would have been no difficulty at all in quashing the order passed by the commissioner of the state tax, delegating his power under section 83 of the subordinate officer on the ground that the same is without jurisdiction. Now, again, I'll take it. This has to be again ऊपर कर देने का. It was a Paragraph 35, in the case in hand, section 83 makes it abundantly clear that it is the commissioner's opinion which is relevant. The legislator has not failed to confer its power upon the commissioner. Whether such power conferred upon the commissioner by the legislature would have been delegated to the 3 subordinate of authority. This may be, it has been delegated. Referred to in above by the virtue of the order dated 15 January, passed by the sense of the power under section 3 of section 5. We will clause 91 of section 2 of the Act, whereof it says, although there is no specific, last thing like important, although there is no specific challenge to the order dated this, passed by the commissioner of state tax delegating his power under section 83 to the subordinate authority, yet we are of the view that by virtue of such order is, this is important over here. Such orders are impugned, order of provisional attachment cannot be defended. Now, delegation of power of provisional attachment I have already completed. Now, whether cash can be seized, let us test it under section 67. Now, relevant legal position is 67(2) of the GST Act, where the proper officer not below the rank of the joint commissioner either pursuant to an inspection carried out under subsection 1 or otherwise has reasons to believe that any goods liable to confiscation or any document or books or tape, which in his opinion shall be useful for any relevant or relevant to any proceeding under this act are stipulated in this place. तो मतलब कि subject matter of seizure क्या हो गया? आपका हो गया goods liable for confiscation, document, books, tape, 4. Yes, सीजर में goods तो सीजर मतलब कैश को आप goods नहीं बोल सकते हो. ये it is, I think everybody will agree to this. Neither it can be said to be a document, neither it can be said to be a books, and neither can be said to be things.
Now, things as per Oxford Dictionary, any object. Let me calm down for your AM versus Union of India, Gujarat High Court has clearly categorically held that cash cannot be part of a seizure. I'm running short of the time, and thereafter I'm skipping some. Now, handling, inspection, search and seizure, that is point to be considered is breach of fundamental right, reasons to believe. I've stated jurisdiction, ये देखना बहुत जरूरी jurisdiction को CCTV. Second search on the same SSC, second search करना कि सही है, क्यों कर सकता है, कब कर सकता है, ये भी देखना जरूरी है. Post search summons, inspection, search of prior period to implementation of GST, that is VAT period. Now, jurisdiction, an important judgment of Canon India is very important. कि अगर डेलीगेटेड अगर नहीं किया गया है लॉ में, उसके पास में अगर डेलीगेटेड नहीं है, तो द कंसर्न पर्सन कैनॉट पास एनी एडजुडिकेशन ऑर्डर. क्या हुआ था यहाँ पर कि द सर्च वाज कंडक्टेड बाय एन एडिशनल डायरेक्टर जनरल एडीजी of revenue intelligence, DRI, who does not have the power to pass any assessment order. Similarly, हमारे हिसाब से there are lots of judgment. Ankit will also confer upon this. There are lots of cases, and when in one of the cases the court has given stay also, whereof the state revenue intelligence department, Bureau of Investigation, जो बेलियाघाटा में है, they cannot go for seizure as well as adjudication. Seizure कर सकते हैं, adjudicate नहीं कर सकते, वो demand raise नहीं कर सकते. Demand has to be raised by the proper officer as defined in the law. Now, this is important. Territorial, functional, ये categorical jurisdiction, ये तीन jurisdiction का wing है. ये जब भी सीजर हो तो उसको अटैक करने के पहले आप 3 पॉइंट को आप ठीक कर लो, इसको मैंने चेक करना, टेस्ट करना है. नाउ समन्स it is basically under Code of Civil Procedure 108 section 27 and इसमें it is to be issued by the court to appear in the court to defend it. मेरे को बोल देना से बंद करना, कोई बात नहीं. And one of the very important case, whether the managing director of the company or any person of the company can be summoned. It is a very important case. ये है सेस्टेट का केस है, although ये ELT 284 ELT 326 झारखंड हाई कोर्ट में रिपोर्टेड है. सेस्टेट का नहीं, सॉरी, इज ऑफ झारखंड हाई कोर्ट, वेयर ऑफ इट कैटेगरी सेज कि अगर समवन आप किसी को भी बुलाओगे, मैनेजिंग डायरेक्टर परचेज तो देखेगा नहीं, अगर उसका देयर इज अ मिसमैच तो वो ही कैनॉट गिव अ रिप्लाई. द प्रॉपर ऑफिसर हैज टू बी डेप्यूटेड एंड ही कैन बी डेप्यूटेड. नाउ एक्सरसाइजिंग जुरिडिक्शन सेक्शन 6 Section 6(2), you know it very well. जरूरी था तो उसको लेने के लिए कि जो CGST का ऑफिसर है, अगर वो सीज करता है तो ऑन दैट वेरी इशू SGST का ऑफिसर उसके पास में नहीं जाएगा, although he is having the jurisdiction of that. Now थोड़ा सा आई एम रनिंग रिपीलिंग सेक्शन जो है कि वेदर GST की पीरियड में बैट का कोई सीजर अगर हो सकता है कि नहीं हो सकता है. It is very much possible, as is allowable. It has been held by in the case of Seen Golden Jewels India Private Limited versus state tax officer. ये केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है, and I think the ASG appeared in this matter when he was not in the panel. Now, this is very important. Search seizure, CGST Act rule, section 67 to section 71. Section 122 to 129 to 122, thereafter 129 to 132, section 138 to 141, CPC का 27 to 32, इसमें समन भी आता है, इशू समन भी है. ऑर्डर 5 रूल ये CPC का है. The court is guided by this CPC. CRPC section 94 and section 100, IPC section 193 and 128. And evidence at 159 and 161, it is covering search and seizure. Now, search and seizure of goods in movement, I've covered one portion. Now the agenda is document required for movement, inspection of goods in movement, detention, seizure and release of goods and conveyance in transit, relaxation procedure, confiscation of goods and conveyance and levy of penalty and court judgment.
I think just I'll take one judgment, two judgments. I'll take two judgments of whereof under क्या होता है कि the seizure is in the seizure when it is completed, MOV 9 is issued, and recently there was a judgment whereof it said that कि MOV 9 भी नहीं आपको DRC 7 आपको issue करना पड़ेगा. It is mandatory in one of the judgment it has been amended. तो अगर सोचो कि आपका DRC 7 इशू होता है, अपने यही रहते हैं कि DRC 7 इशू होता है, तो whether if it is in the name of a transporter, तो क्या होता है? Whether it is an appealable, you can appeal it. क्योंकि आपको तो प्रोविजन एक GST आपको क्रिएट करके देता है, whether it is appealable or not, this is very important. So in one of the matter from Calcutta High Court Jalpaiguri bench, it says section 107 starts with any person aggrieved by any order. ठीक है, तो any person covers, भैया हम अगर कंसर्नर है, वो ट्रांसपोर्टर है, वो ड्राइवर है, तो any person I can enter over there. The appellate authority has dismissed my appeal on grounds there कोई मेरे ख्याल से कोर्ट के थे क्लाइंट, so thereafter I filed a writ before the Calcutta High Court, which the division the single bench of this Jalpaiguri High Court ruled it in my favor that कि आप accessible अगर है तो उस टाइम क्या कि I filed it manually without wasting any time. 4 महीने का जो टाइम था, 3 महीने का जो टाइम था, within that 3 months I filed it manually. Second is कि whether I'm not traveling, I'm giving the trouble to sir to 68 का, definitely 67 भी उनसे सुनेंगे, मैंने I'll be elated to hear it, but 67, 68 दोनों क्या एक issue एक burning issue आया था मेरे पास में, whether 67 and 68 both can be at the same stretch of time. मैंने एक imagine करो कि एक गुड्स के ऊपर में 67 का भी अगर सेक्शन लगाते हैं और एक गुड्स के ऊपर में 68 का भी लगाते हैं, इट इज पॉसिबल और नॉट. तो एक one is seizure of the godown, 68 is seizure of the goods in movement. तो 67, 68 आप नहीं लगा सकते. So this was held in. I'm very poor in citations. My citations also I forget. This was many judgments I was relying upon. But ये Sandip Kumar Singhal versus Deputy Commissioner Revenue is by your name only. Yeah, okay. His father case is next. So, whereof the Honorable Calcutta High Court is said that 67 and section 67 cannot be invoked in respect of goods stored in a warehouse or a godown which has escaped payment of tax or is likely to cause tax evasion. Same implies that the goods were in static position inside the warehouse but not in transit. Section 129 can be invoked only in respect of goods and conveyance which are in transit. So, this, sir, I request one thing to sir कि sir कुछ mention के ऊपर में I want your opinion, क्योंकि we have our opinion, definitely myself Ankit हम लोग को तो opportunity आपस में discuss करने मिल जाता है, to catch a hold of you is very difficult. So thank you for giving me this opportunity. So thank you, sir. It was a wonderful deliberation, and being speakers, we can understand the kind of effort we put in the presentation, the kind of science we put in. We can have another round of applause for the presentation. So I'm also happy to share that we have Advocate Ankit Kumar, the chairman of the IDD committee. I request Ankit ji to share a few words about the series that we are having, and in the meantime, Shyamji will do the technical. Very good evening to all the participants, elected speakers, Sandip sir and J.K. Mittal sir. So as we discussed on the first day of the session, what is the object of this whole series was that one of the speakers who today it is very nice that we are having both these speakers physically with us, but the object was that one of the speakers takes us to the relevant provisions and the other speaker who is online or maybe from outside the town will take us into the insights as to what is the litigation going on, so that we can have a overall idea of what is going on at India level, not only at Calcutta level. So we have designed our series accordingly. We have done it today. We are one of the most important topics, I would say, inspection, search and seizure, including 129. As Sandip sir rightly told, sir, we will of course like your views on whether 129 mens rea is to be seen or not. This matter is pending at Supreme Court.
the Ashok Sureka judgment of Calcutta High Court has been appealed by the department at Supreme Court on the ground that 129 mens rea is not applicable. But Satyam Shivam is there, no? Satyam Shivam, yeah, of course it is there, but it was not represented at all. It was a judgment directly given by the court. But here, state has filed a SLP, sir, and we have given our counter also. So mens rea is based on mens rea. So whether those things are applicable or not, and of course, Sandip sir has done a great effort to bring in so many judgments, which we will try to share the PPT with the audience also so that we can get an overall picture. With this, I request J.K. Mittal sir to take us through the next chapter of the session. Thank you, sir. Thank you. Thanks, good evening, and thank you for giving me this opportunity. The president, by attending the diet, Mr. Sandip, and other participants. The topic of the day has already been introduced, the search, seizure and inspection, including detention of goods under 129. My view on some point maybe will differ than my co-speaker, Mr. Sandip, but that is, how the law evolved, and we should appreciate instead of, questioning each other's, view. Section 67, if you read it, one can explain the people given. Section 67. Can just read it. 67. One and two, is entirely different. If one read it very carefully, one will reach at a totally different conclusions. We are sitting in, income tax office, and I'm sure you are well aware of the section 132 of the Income Tax Act or such things. And those who are more reading that, I read it when I was a student, and then again I read it, purpose of evolving, the law under GST. It is totally on the different parameters. Suppose today I am evading GST. Can search be conducted? Can a search be conducted in my premises? That should be the right question. In fact, I have drafted a few questions. If you see, in my view, sorry, because of the camera, I am missing the camera. I'm so sorry. Definitely, the movements could not be right. Sorry, my audience, who's online. The section 67(1) is for the purpose of inspection. That is the verification if the certain things my friend Mr. Sandip has already elaborated. My point of view is that merely because somebody is evading tax, somebody has taken excess credit, officer failed, then he can go for the search. Search is for very, very limited purpose. As compared to the Income Tax Act, where you slip by reading the entire section 132, so lengthy. Therefore, this point of difference probably the officer never noticed. Indirect tax, the search has become very common. Recently, I was addressing a conference of trade. I asked a question in last 30 years in your association, anybody was searched under the Income Tax Act? They said never. But in the GST, they said one or the other traders is being searched almost every day. That is the situation I find, because indirect tax and direct tax is the two sides of the same coin. If I am evading tax there, then I am evading tax there also. So why such a difference? That yes, their understanding of the law is totally different. If I may be permitted to say
that abuse of powers under indirect tax is too much. Other day I was with your commissioner, Mr. Khalid Anwar, and he asked me, I must tell him, tell to the audience always, and I will try to, I promised him. He said, in Calcutta or the West Bengal jurisdiction, so far as state tax authority is concerned, such is not common. Someone is not common. If anybody approached to me, he said, I resolved the problem, and everybody was, accepting that view. And that's why I said, everywhere it's not the people like you, even within the Calcutta, central tax authority may not be like that. Therefore, it depends upon how the officer implement the law. He himself is in any company, in any organization, any firm. If the topmost authority is able to watch everything, the result would be totally different. In fact, recently, few professionals were traveling together. I asked a question. Why every big company? Now all promoters are in jail. That is my question, As a student, when I was a student, I was thinking that they are very big short. Now I believe that my belief was not correct. That's why probably as a student, I decided not to invest any money in sale of any company. That means if the promoters of that company has delegated everything to the junior most officers, at some point of time, that company will not perform well. Similarly, here, in this question, we try to search out section 67 and 67(2) is totally different. 2-3 points I will highlight. If you go back to the 67(2), please, my friend, if you can back. That's why the search is very limited. They said the goods which is liable for confiscation, not for every goods, and liable for confiscation, that is section 130 you have to read. To be very frank, if you challenge any search and the judge asks their original reports, no reason to believe you will find. There is a stereotype, maybe pre-printed forms like this. And the other things are little different. Goods is liable for confiscations. Other things, documents, reports, other things which are secreted and useful under the proceedings or relevant to the proceeding, then only he can order for search and seizure. Now the point which I am trying to make it here, which is very important, who has to form this opinion? Because there are two things happen when the search is conducted. One, you will see the Panchanama. Other things you will see INS 02. INS, generally in the search, in 99 to 100% cases, the search is not being conducted by the joint commissioner or the senior officer. He applies to the anti central tax officer, which is generally the inspector or the superintendent. Once they make INS 02, he has a pre-printed form, which Gujarat High Court in Justice Partyawala in one case also said, which I am saying right from the very beginning, that form is contrary to the law. It says 67(1/67(2), inspection / seizure. During the inspection, there is no seizure. And inspection and seizure cannot be flat. These are two different, activities and different parameters, law and traffic different. Therefore, once INS 02 you see, they will say, I swear sworn verification found these are useful things for pre-printed line. Therefore, I am seizing. Therefore, who is forming that opinion? Opinion is being formed for the seizure by superintendent or the inspector. Whether under the law it is. Law, if you read, it is not permitted. The such person, if you read the word, is there, the joint commissioner, etc., and he was liable for confiscation, he said, in his opinion, his means if you read the sentence, officer not below the rank of the joint commissioner. Then if you read further, such goods, such means which in his opinion, such things
In his opinion, therefore the opinion has to be by the joint commission or his senior officer who is forming the opinion. Many times questions have been raised. How he will come to know whether the something is lying there which can be useful, or the goods is lying there which is liable for confiscation. How he will know? The law is very simple. My friend Mr. Sandip also told you, if you have heard him carefully. So opinion has to be formed by a person written in the law, not below the rank of that. If you say he never knew, he came to know once he has done this premises, that search itself is illegal. Why? Because this provision has many safeguards. The safeguard has been made so that this power is not abused. Even the question is not that after search whether he gets something or not. Before search, he must collect the information. My friend used the word. कि रेकी करते हैं, महीने बैठते हैं. That means whatever ways and means, first he has to collect the information. That information must be analyzed by the proper officers, and if they get a conclusion search is necessary, then only search can be conducted. Those professionals even raise the questions. Many of the professionals sometimes, because every day meeting with the departmental officers, they also think alike. This is not correct. If the department or the Ministry of Finance officers will there, they say, no, you must join hand with that. He can't. Because we are on the different side of the table. And particularly on the scenario, if you are abusing your power, if they think that we never knew and we can search it and then we will come to know it, then they should go to the parliament. And they said this section must be redrafted. If whenever officer feels he can search any premises. So no, it's not like that. But in practice it happens. Therefore, this is very important point. If you challenge the search, or if you want to have your point of view, you have to frame your mind in such a manner. I fully appreciate. The people always said, if going to the court is not very easy, fighting with the officer is not in the interest of the business. But don't fight, then what would happen? I can remember one case of a company called Ico Trade Forward. He was a very small man, but he has now risen a lot. So once he came to me, his so-called notice was trying to be about 80 crores or so. He was afraid to take appointment with me. He called one of my past junior, he is sir, say appointment kara. My junior asked him, why you are not directly approaching? Yes, sir, say dar lagta hai. Then he asked the third question, why? He said, once search was conducted, I approached it, and he said, you challenge it. Because it was illegal like this, some proceeding search, audit, etc., whatever it was. I did not. Ultimately, he came to me. I said, then why you did not, challenge it? मैं तो भूल भी गया क्योंकि रेगुलर मीटिंग नहीं था तो एक बार मिले इसे कि सर आपने कहा चैलेंज कर दो आई डिड नॉट चैलेंज मैंने कहा व्हाई यू डिड नॉट चैलेंज मतलब मेनी ऑफ द माय फ्रेंड्स बिजनेसमैन प्रोफेशनल्स माय ऑडिटर्स दैट मैंने पंगा लेना ठीक नहीं है ऑफिसर विल बी वेरी एंग्री तो मैंने कहा आपको बहुत प्यार किया होगा जब आपने चैलेंज नहीं किया मतलब आप 80 करोड़ का नोटिस आ गया 10 करोड़ का ड्राइव मांग तो चैलेंज नहीं करने का भी मेरे को अपनी लाइफ में कोई भी डिपार्टमेंटल ऑफिसर ऐसा नजर नहीं आता मेरी 2-4 पॉलिसी मेकर को छोड़ दो जो है ग्राउंड लेवल जिससे हमें लेना मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में बैठे थे नो पावर टू सर्च वो वहीं पे बैठे हैं पॉलिसी बनाना इज टोटली डिफरेंट हमें तो रोज उस पुलिस वाले से मिलना है जो सड़क पे मेरी गाड़ी रोकता है मैं तो उसके कंडक्ट से कमिश्नर का कंडक्ट देखूंगा मैं कमिश्नर का कंडक्ट कितना ही सुंदर हो मेरे को क्या फायदा Then ultimately we challenge it and he succeed. He succeed, I lose the money because I was in the court, commissioner passes an order dropping that demand. और जिसने लिखा मैंने कहा लिखी मेरा वकालतनामा है उसने हियरिंग भी देखी मैंने कहा आज तक इंडिया का कोई ऐसा केस है
कि जिसमें हीरी नहीं और डिमांड ड्रॉप हो जाए. It depends upon your states, it depends upon how you view it. Because otherwise, Indian officer feels that, which is my view, which may not be the view of everybody. You are weak. आप डरपोगे तो आपको वोट डालेंगे. Approach if is honest, litigation will come down almost maybe 2% what we have today. So this is the point you always bear in mind. Now the question of the cash seizure. My friend has quoted one judgment of Gujarat High Court that I am not aware. But in GST first judgment came from MP High Court. They said the cash can be seized. I was having a different view. On the very first day the judgment is wrong. अब ये मत सोचना कोई जजमेंट गलत नहीं होता. जजमेंट ठीक इसलिए होता है क्योंकि वो जजमेंट है. जब तक वो चैलेंज ना हो वो रिवर्स ना. I remember maybe around more than 20 years before the Supreme Court reversed their own judgment whether the lottery is a goods or not. Sunrise Enterprises. And they said no, it is an actionable claim, not a goods. Once I got an opportunity to fight it for the chartered accountant, Arvind Goyal, I am sure you would have read that judgment. I was very sure that he will get his money with interest which he got. The question arises whether the cash can be seized or not. Why it cannot be seized? You read this only. You will reach at the right conclusions. First, whether it is goods, because there are 4 terms have been used here. Goods liable for confiscation. Definition of the goods given in the GST law itself, which exclude money. That means it is not goods. Now comes to the documents reports. It is not. Now the MP Court that it is things. The first question is that if the Parliament excludes something from the definition of the goods, and in the same way in provision the 4th term is used, can you presume it is included in others? To my mind, it is too far to interpret in law like that. Just make wrongs only because that probably we have not assisted him in that manner. Second point, if the cash is seized, then read the second proviso here. Second proviso says, and it will help you. Don't restrict your knowledge to the GST law. आप कोई एडवोकेट होता है उसको किसी लॉ पे खड़ा कर दो उसी की प्रैक्टिस स्टार्ट कर उसने पढ़ा नहीं होता. एक बार मैं किसी एडवोकेट का इंटरव्यू ऑफिस में ले रहा था. उनका ये तो हमने सिलेबस में पढ़ा ही ना. तो मैंने कहा आप तो आउटडेटेड एडवोकेट हो जाओगे. पार्लियामेंट तो हर रोज एक नया लॉ बनाती है. वो तो किसी ने भी नहीं पढ़ा थे. तो आप ये कहते नहीं हमने पढ़ा ही नहीं है. What lawyer means you accustom yourself to how to read the law, how to interpret. सेम चीज आप दूसरी जगह भी यूज कर सकते हैं. इसमें लिखा हुआ है सेकंड प्रोविजन यू रीड वेरी केयरफुली कि व्हाटएवर यू हैव सीन अदर देन गुड्स की बात कर रहा है. गुड्स तो है नहीं. रिकॉर्ड्स डॉक्यूमेंट्स थिंग्स यू कीप इट सो लॉन्ग एज यू रिक्वायर फॉर योर प्रोसीडिंग्स and then you return it. It is written there. Because when they take the cash, they directly go to the State Bank of India, deposit it in the name of the President of India. That is, they don't require. That means as the second provision we have to return it to. Third point. If anything is seized, the that things, that goods, or that maybe documents report, that has to be kept as it is. You can't change it. Even like GST का taxman का book ले रहा था, ठीक है, रख दो दूसरा taxman का book लेके ले जाएंगे. No.
It may be same case number, maybe same addition, but that is not the goods you have seized from my premises. Therefore, that is not the currency you have seized from my premises. मेरे से जो 100 रुपया लिया था वो तो आपने बैंक में जमा करा दिया, अब तो दूसरा ही निकाल के लाया। आप ये नहीं कह सकते 100 रुपया तो वही गांधी बाबा है, वही 3 कलर 2000 का नोट है, वही मोदी जी ने जो गम किया वही है, उससे नहीं फर्क पड़ता। ये those who go to the court every day, particularly those who practice in the criminal side, they understand the implication of these things. You can't leave. One more thing, they said which are secreted and relevant for the proceedings. In Arvind Goel case, the very first day when we filed a petition in the Corona call, the judge asked आप उस पैसे का क्या करेंगे? बोला नहीं हमने इनकम टैक्स को चिट्ठी लिखी तो बोला लिखते रहना ना, इस पर कैश दे दो, इनकम टैक्स वाले सोचेंगे। एंड दे फाइल अ फाइनल एफिडेविट इन द कोर्ट, इनकम टैक्स को कई चिट्ठी लिख रहे हैं, कुछ कर ही नहीं रहे। जज कह रहे फिर आपको क्या पाया? मतलब इनकम टैक्स हैज टू सी एवरीथिंग, यू नो, जीएसटी पीपल फील दैट if they are the supreme body, they are superintendent, PMLA, CBI, income tax, they will do everything. That is a wrong understanding. मैं कहता हूँ पावर पुलिस मिसयूज नहीं करती है जितना जीएसटी वाले करते। हो सकता है कि जो ऑफिसर्स होंगे उनको ये वीडियो पहुंचेगा तो उनको बुरा भी लगेगा। Calcutta High Court has admitted a petition because there are two conflicting judgments now, as you rightly told, MP and Delhi. Now Calcutta High Court single judge has admitted a petition and directed to deposit the amount with registrar general and affidavit annexation. So it is deposited with the registrar general of the High Court. Therefore, you see how they feel like that. Sometimes they go to custom acts, you know, the custom make Supreme Court decisions से क्या can be. No, judgment cannot be read as a Bible or a Quran or a Ramayana. You have to see under which act, what was the definition. There the goods does not exclude the currency. Therefore, the definition of the goods is totally different. Now the few more questions. Sport payment, my friend has done. Yes, sport someone is very, very important. Particularly once we are sitting in the income tax building and you read the income tax provision, you will find the answer there. And before I comment upon it, you must understand that sometimes the officer asks you, where it is written, I can't do it. So people comes to me and they are the officer is saying, yeah, I want to do it, where it is written, I can't do it. I said the law is otherwise. Where it is written, he can do it. That is the right question. It is not the right question where it is not written. For citizen, it is totally different. I can do everything unless it's forbidden by the law. For the officer, he can't do anything unless it's permitted by the law. If you understand these two, lines, then you can understand the law very correctly. In income tax law, if you read section 132(4), subsection 4 of 132, there I read, they said each such party has been permitted on the spot at the time of the such statement of the person can be recorded on oath. Why it is written? Because the parliament and their own wisdom think we have to empower them. But here they don't. It is already misused law, 1944 onwards. Why should we empower them? So they did not empower. In section 67, where it is written, they can record a statement. Therefore, they can't record a statement. Am I correct? Otherwise, the law में बिना लिखने उनको पावर मिलती है, तो फिर 67 को पूरे में लगा देते हैं। जब वो कर ही सकते हैं सब कुछ, if you believe like that. मेरा मानना होता है ऑफिसर से ज्यादा नहीं मिलना। अगर आप डेली ऐसे फ्रेंड की टोली बना लो, जो मंदिर जाते हैं तो आपको मंदिर जाने का मन करेगा। वो डेली जो शराब की पार्टी में बैठते हैं तो कहीं ना कहीं आप ना भी पीते आए तो आपकी बाड़ी या आपके हस्बैंड कहने लगे कि आज तो जरूर एक काम लगाया, थोड़ी सी तो स्मेल आने लगती है ना। तो आप ऑफिसर से बहुत ज्यादा मिलते हैं, मेरा ये मानना है
इसलिए मैं हर सी की ब्रांच के कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो एक लाइन बोलते आता हूं कि सुपरिटेंडेंट से मिलना छोड़ दो तो आपकी बुद्धि 4 गुना तो वैसे ही बढ़ जाएगी। वो आपको माइंड को यूटिलाइज कर लेगा और आप वैसा ही सोचने लग जाते हो, उसमें हम सोच ही नहीं पाते। आपकी इंटरप्रिटेशन भी वही होती है, रेट ऑफ टैक्स भी वही होता है, आप मतलब सब कुछ वही सोचते हो। और मैं तो कई बार लोग क्लाइंट लेके आते हैं, कहता हूं देखिए आप क्लाइंट की तरफ से है कि डिपार्टमेंट की तरफ से, मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आपकी भाषा ऐसी होती है, आप फैक्ट्स बताएं, डोंट गिव द जजमेंट ऑन दिस। तो आपको एक पॉइंट लगेगा कि जब हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि ऑन द स्पॉट वो तो सम्मान इशू करता है। सेकंड पॉइंट आप समझ, अब आप फिर जाओ सेक्शन 67(2), आप इसको गहराई से पढ़ें, तो इतना छोटा है, आप इसको 40 बार भी पढ़ सकते हैं। इनकम टैक्स वाला सेक्शन नहीं पढ़ सकते आप 132, एक बार भी पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, क्योंकि उसमें तो प्रोविजन ऐड करते ही रहते हैं, सब सेक्शन ऐड करते ही रहते हैं। इनकम टैक्स में थोड़ा अलग तरीका, मतलब परिपाटी है, कमेंट करते हैं। इवन जो जब इसलिए इनकम टैक्स में हमारे जब बैठना भी नहीं चाहता है, ये तो कैसे पढ़ना समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं, क्योंकि ऐसा लोग कोई मिलेगा नहीं ना, पूरे हिंदुस्तान में ऐसा लोग नहीं मिलेगा जिसमें 10-10 प्रोविजन हो। नहीं, पहले प्रोविजन मेन सेक्शन का एक्सेप्शन है, सेकंड प्रोविजन फर्स्ट प्रोविजन का एक्सेप्शन है, थर्ड फर्स्ट और सेकंड का, तो जब तक जमा घटा करेंगे तो भूल ही जाते हैं। अब ये पढ़िए सेक्शन 67 टू व्हाट मैंडेट। जैसे कंपनी का एक सीएमडी होता है, कंपनी का सीएमडी अपने सीएफओ को डायरेक्शन देता है, तो उतना ही उसको काम करता है। Here, you know, they are the road Hanumana. He did not find Sajivan working to pura body ले करते। The law, in the law you can't do it. The law mandate that, read it very very carefully. इससे छोटा सेक्शन आपको मिलेगा नहीं। Said that who has to form an opinion? Joint Commissioner or such and such. Then he said he can advise any other central tax officer to search and see, or himself can search and see. Is it clear? After I make an opinion, I can appoint any other central tax officer, go search and see. इसके अलावा तीसरा पॉइंट यूज नहीं है, आप पढ़िए पूरी। His mandate is very limited. Go search and see. लेकिन वो कहता है उससे क्यों चला, and here is the misuse, and that's why I criticize officers. फिर कुछ ऑफिसर्स को लगता है कि नहीं हमारी बुराई हो रही। मैं तो कहता हूं कि जितनी भी सर्च पार्टी हो, आप उनके फोन 1 महीना पहले के 1 महीना बाद कुछ वही कर ले, सारे जेब में पाएंगे। क्योंकि जो भी क्लाइंट आते होते हैं इतने पैसे की, इतने दो इतने से स्टार्ट होता है। कोई क्लाइंट सोच में, कुछ क्लाइंट नया नया होगा, नहीं कुछ नहीं लिया, कुछ लिया, फिर आखिर में कहते जितना ले लिया, अब तो हमारे को पैसा ही नहीं। मैंने कहा तुमसे डबल फीस लेनी। जब आप जिसको फीस नहीं देनी चाहिए उसको दे रहे हैं, हम तो मेहनत कर रहे हैं। Have you understood this? The mandate of the law to advise the central tax officer search and seize. So can he exceed that power? Answer is no. And then you read INS 02. Can you read the summon issued under section 70 of the code? Both will be two different officers. मैं तो रोज ये पढ़ता हूँ, इसलिए जानते हमारे से एक बिल आता है, स्टडी जानते होते दो। अभी कल भी एक क्लाइंट आया है, उसका 450 पेज का 100 क्रोज नोटिस, अभी फ्लाइट में लेके मैं बैठा हुआ था, तो फ्लाइट के 2 घंटे की फीस तो हो गई नहीं, अभी 4-5 घंटे और साइड लगेगी उसमें, लेकिन कुछ पॉइंट बहुत फंडामेंटल उसमें मिले। स्टडी फीस इसलिए नहीं होती कि नहीं हमें देखना कितना सुंदर है इसलिए फीस लगा, वो पॉइंट तभी मिलते हैं, तभी मैंने बताया टू डिफरेंट ऑफिसर्स। I can remember just before the COVID, one my friend chartered accountant from Delhi bring his client.
काफी मतलब उनको सच में इतनी परेशानी थी, वो क्लाइंट इतना परेशान था कि सर बस सब कुछ बिकवा दो, मेरे को भी भेज दो, चाहे मेरा बस जिंदगी इस तरह बोल भाई इतना क्यों करे रहे हो? भाई फ्रेंड सर इनको मैंने कह दिया सम्मान आया तो जाना तो पड़ेगा। मैंने कहा देखिए डोंट गिव एडवाइस, आप एडवाइस लेने मेरे से आए आप फैक्ट्स बताएं और आपका विश्वास नहीं आएगा। व्हाट द कोर्ट वांट्स एंड ऑर्डर, या आप इस कंपनी से कोई डॉक्यूमेंट कुछ चीज नहीं मांगेंगे, आपको जो भी मांगना है हाई कोर्ट से मांगे, राइटिंग है और सारे ऑफिसर कोर्ट में पढ़ते हैं। जो आदमी अपने आप को बेचने का तैयार था उसने सोचा नहीं कि ऑफिसर्स के अगेंस्ट भी ऐसा हो सकता है। ये तो मैं वो ऑर्डर बता रहा हूँ जो राइटिंग में है, उनका बिजनेस दोबारा चल पड़ा क्योंकि वो ऑफिसर डरा के इतना डिमोरलाइज कर देता है तो उसकी हिम्मत ही नहीं। गलती सबसे होती है, डिस्प्यूट सब हो सकते हैं कि आज भाई साहब ने एडवाइस दी 5% टैक्स देना है, ऑफिसर कहता है 18% लगेगा, ये हो सकता है, दैट इज ए डिस्प्यूट। मैं कहता हूं कि सीज नहीं कर सकते, इससे सीज कर सकते हैं, देयर कुड बी दैट, बट दैट इज नॉट ए केस वो कि आप उसकी जिंदगी खराब कर देंगे और उसकी कंपनी को बर्बाद कर देंगे, दैट इज लॉ नेवर कमिंग। मैं तो अभी किसी कॉन्फ्रेंस में बोल रहा था तो जिसको लोगों ने देखा मार रहे हैं लोग, उसको सजा देने के लिए तो कहते हैं कि नहीं और जो 100 करोड़ रुपए टैक्स नहीं चुका है उसको कहते हैं कि अभी फांसी लगाएंगे, कौन का सपोर्ट दी सम्मान होगा सपोर्ट सब कुछ। सेकंड पॉइंट सेक्शन 70 के साथ पढ़े, वेरी इंटरेस्टिंग। ये सेक्शन 70 व्हाट इट सेज एंड व्हाट दिस सेक्शन सेज। पहला पॉइंट तो मैंने बता दिया आपको, उसमें भी लिखा हुआ है, अब वो चेंज हो गया सेक्शन 70। अगर आप यू कैन फाइंड द सेक्शन 70 बाद में 10-15 स्लाइड के बाद इस सेक्शन का पहला वर्ड ही पढ़ना है, द प्रॉपर ऑफिसर्स। नेक्स्ट स्लाइड देखिए, नेक्स्ट एनी सेंट्रल एक्साइज ऑफिसर। देखा सेक्शन 14 जो पहले था और अब है, आपको डिफरेंस नजर आएगा, इसलिए स्टडी डाली कि उसी को ढूंढने के लिए चावल के अंदर वो मच्छर कहां छुपा हुआ है उसको ढूंढने के पैसे। Is there any difference or not? Any means any. For that proper officer, my friend has quoted a judgment of canon. He said that proper officer means that particular officer, not any or every. Section 138, my friend has quoted that judgment I read when I was a student. The Supreme Court said the bank means the very branch where the check was, from. Not every, and it is a question of protection. There you have to file a case. Therefore, now the question arises, which I am trying to put in your mind: is the proper officer who has to form an opinion whether such need to be conducted or not. Then the proper officer used here in section 70 could be the two different officers or it should be the same one. Right? Finding the question right. क्योंकि क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, आंसर समझ में इजीली आ जाए। मेरे ऑफिस में 20 साल से मैं हर जूनियर को एक ही पूछता हूँ, मैंने क्या पूछा वही बता रहा हूँ। आप करोगे तो जब आपको क्वेश्चन ही नहीं समझ आ रहा है आंसर कहां से ढूंढोगे? खुद बता दो, खुद वो मेरे साथ किसी का काम करना वेरी डिफिकल्ट। अल्टीमेटली 2018 में मैंने सोचा सबको हटा सकूं, कोई अकेला ही काम। And then I find most of the advocates are working individually. उनके पास कोई नहीं होता है क्योंकि हमें ऑपरेशन खुद ही करना है। स्टडी चार्जेस हमें ही लेने हैं क्योंकि हमें ही पढ़ना, वो उतना फर्क बताएंगे। Therefore, the program officer वो लिखता है, if you see the someone language, they said I so and so make an inquiry for GST with बस। Who are you? You are making an inquiry.
Where it is written you can make an inquiry. Neither the word inquiry is defined, nor investigation defined, nor it is defined who will conduct such inquiry investigation. In fact, in every such I have seen it. First, someone is from he was accompanying the search party he had issued. बोला आप सीज कर रहे हो मैं सम्मान इशू कर देता हूँ वो कहते हैं मैं स्टेटमेंट रिपोर्ट कर देता हूँ फिर जाने के बाद फिर एक और सम्मान आता है वो दूसरा ही ऑफिसर करता है महीने के बाद आता है वो तीसरा ऑफिसर करता है इमेजिन एक पुलिस स्टेशन के अंदर 50 पुलिस वाले एवरीबॉडी सेज आई एम द इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कैन इट बी परमिसिबल अंडर द लॉ यू आस्क एनी जज that is they have not been taught or they have been taught how to harass people. That's why the winning case, अगर suppose मेरा winning rate 2% है, मेरे को कौन बुलाएगा यहाँ कौन हायर करे? लेकिन ऑफिसर फील प्राउड, उनका सक्सेस रेट 20 साल पहले भी वही था, 10 साल पहले भी वही था, आज भी वही है. अगर आपकी कंपनी में आपके ऑफिस के अंदर कोई ऐसा बंदा काम करे तो आप उसको डिसमिस नहीं करेंगे. सब चीज परफॉर्मेंस बेस्ड होती है. One CA was, in C, मतलब one student was in the CA fund. As usually जैसे होता है, he failed, तो thrice he failed. The fourth time, his father used to call him. तो कौन किया बेटा कैसे हो how is fine फोन रख दिया एकदम ध्यान है बेटे का तो रिजल्ट है फोन किया बेटा I suppose your result was to declare today yes so what is the result he said I repeated my last year performance तो परफॉर्मेंस के आपने का कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा फिर दोबारा फोन बेटा लास्ट ईयर तो फेल हो गया था तो तुम्हें बताया मैंने बताया I repeated my last year performance. I never speak lies. मैंने आपको समझने में दिक्कत है. मैंने तो बताया कि सीक्वेंस वही है. यहाँ पे भी जो मोदी जी बुलाते हैं उनको पता नहीं कैसे मिसगाइड कर लेते हैं. तो repeated last year performance. My understanding is that better to make one case rather than make 100 cases. When you have a strong footing, the department winning rate will be 100%. Rather to make it the 5% case. If any case comes to me, I say their winning rate is 8%, 10%, so 90% you will succeed without my efforts. 10% you will put an efforts, there is a chances. You succeed. ऐसी तो आप पढ़ते हैं, आप हवाई जहाज में बैठते हैं, ऐसा थोड़ी हवाई जहाज आज तक गिरा नहीं, गिरता है, फिर भी आप डरते हैं नहीं. अब ट्रेन का इतना बड़ा एक्सीडेंट हुआ क्या ट्रेन उसी के बाद चलनी बंद होगी, उसी रास्ते में चल रही है, क्योंकि आपको पता है कि ट्रेन का गिरना 0.01% चांस, इसलिए अगर वही ये वाली परफॉर्मेंस हो रिपीटेड लास्ट ईयर परफॉर्मेंस, लास्ट नाइट वाली परफॉर्मेंस, तो बैठनी नहीं कभी. Therefore, you think why these summons are being issued by the officer who is not a proper officer, and not first whether he is a proper officer, second he is not a proper officer for that case also. You may be a policeman. Suppose if Delhi का पुलिस वाला कहे नहीं यहाँ मर्डर हुआ मैं इन्वेस्टिगेट कर सकता है, there is no. Therefore, the question has to be put rightly. Unfortunately, neither there is probability is question. मैं कई बार सोचता हूँ कि अब क्यों क्वेश्चन आए, ऐसा नहीं है कि जीएसटी लॉ में सारे क्वेश्चन आए, कुछ पहले से भी चल रहे हैं. Probably this question either has not been carried to the court, or we have carried to the court. The court has not developed on that. कई बार ये चलता है कि पान मसाले का केस है, नो ये तो सारे चोर का नहीं है. क्वेश्चन ये कि जब आप कसाब का केस सुन सकते हैं कई साल, तो इसका भी सुन सकते हैं. चोरी किसी ने भी की हो, लेकिन राइट उसको भी किया कि नहीं यही तो हमको होना है. नहीं, जब सबके सामने मर्डर होता है वही प्रूव नहीं हो पाता है. फिर भी ये राइट है कि कौन ऑफिसर कैसे करेगा. There are 2-3 things regarding someone. First, क्या multiple officers can issue the summons.
Second, can a superintendent issue a summons where the search is authorized by the joint commissioner? Third, on the spot summon. When it's not, authorized, इसको सिर्फ mandate थी search and seize. उतना ही काम कर दिया. Now, one of the vital question, some cases I am doing that sort of also, they went for inspection and they seized us. My friend has rightly said, there are opinion word is there in 67.1 and opinion word is there in 67.2. Suppose an example, I, being a joint commissioner, advise my friend that for carrying out the inspection. While inspecting, he found something. Can he convert that search into the can inspection into the search? Answer is no. He has to give his report of inspection to the joint commissioner. Then read 67.2 again, the very first or second line. Search can be conducted. It says either pursuant of the inspection carried out under 67.1 or therefore when the inspection is not carried out, the search is very limited. Therefore, the allegation of tax evasion, income tax credit, etc. I am very sure. They have no right to carry out the search. टैक्स इवेजन के चक्कर में इनपुट टैक्स क्रेडिट 99% सर तो वही है, आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा, आपने गलत लिया ये लिया, उसके लिए इंस्पेक्शन करना, उसके लिए पार्लियामेंट आपको समय दे ताकि आप अपना रिकॉर्ड जो भी करना है ठीक ठाक कर लो। नहीं, अब उनको लगता है ये तो गलत हो गया तो सेक्शन चेंज कर दो भाई, पार्लियामेंट में मैं थोड़ी बैठा हुआ। आप लिखिए ना, सीधा सेक्शन लिखिए, हमने जिस तरह की आएंगे उसको सर्च करेंगे जब भी करते ताकि वो सेक्शन अगले दिन हम चैलेंज कर दे, वैसे हो जाएगा। आप ऐसा सेक्शन बना नहीं सकते हैं ना भाई। एवरीथिंग इज गवर्न्ड बाय द लॉ, यू हैव टू प्रोवाइड द सेफगार्ड। अगर आपने सेफगार्ड नहीं दिया, आर्बिट्रेरी सेक्शन है तो वैसे ही वो चैलेंज हो जाएगा। अब प्रॉब्लम ये है, कहते नहीं तभी जस्टिस चंद्रचूड़ बाय डीलिंग विद दिस बैंक अटैचमेंट केस ऑफ फेक इनवॉइसेस he said in April 2021 widely report, the parliament made a very good attempt, but enforcement agency, DCCI, etc., they made this law is a tattoo. And he further said, don't believe every taxpayer is चोर। तो हर एक कोई चोरी समझते हैं, सच नहीं, सर्च एक्सेप्शंस केसेस में होती है। यहाँ पे सर्च रूटीन होती है, इसलिए सर्च की वैल्यू खत्म होती है। संबंध बढ़ रहे हैं। जिस कंपनी के अंदर 100% पब्लिक से ओन्ड कंपनी, 100% नवरत्ना कंपनी को भी अगर साल में 10-5 सम्मान आ जाते हैं, फिर ऑफिसर्स आई एम श्योर 100% नीड टू लीव देयर, क्योंकि वो तो पब्लिक ओन्ड कंपनी है भाई। If any tax evasion, any tax misuse, he will not be a personal beneficiary होता है। प्राइवेट में तो आप कह सकते हो 5% टैक्स दिया आपने चोरी की, आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट ज्यादा दे दिया चोरी की। ये तो पब्लिक सेक्टर में तो एक पॉकेट से दूसरी पॉकेट यही तो है, कोई फर्क थोड़ी है। लेकिन यहाँ पे कोई पब्लिक सेक्टर कंपनी ऐसी है जिसको साल में 10-20 सम्मान ना आ जाए, इनकम टैक्स की कमी नहीं है 20-25 साल में। लेकिन गवर्नमेंट इस चीज को समझ रही है, ये समझ रही है तो अपने फैमिली लोगों को समझा नहीं पा रही है जो ब्यूरोक्रेट्स को। अभी 2022 में they issued a circular regarding summons, सर्च का भी किया। उसकी पहली दूसरी लाइन ही पढ़े, उसमें लिखा हुआ कि we issued guideline in 2007 and 2015 and we are retailing the same। लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? मतलब बाद में आपको बताना पड़ेगा, पहली जमात के बच्चे क्या भाई A4 एक्ट जो कल बताया आज फिर बताएंगे, पूरा साल भर A4 एक्ट बताया तो आपको याद होगा। आप ऑफिसर्स हैं, एक ही बार बता दिए गाइडलाइन, अगर नहीं माने तो एक दो लटका दो। जब आप बिजनेसमैन को लटका करते हैं तो उनके लिए भी इक्विवेलेंट होना चाहिए, तो दैट इज बीइंग मिसयूज्ड। अब एक और पॉइंट आता है, इसी सबसे नीचे बड़े बोतल रीजन टू बिलीव जो आपने पूछा, whether you can take that reason to believe or not.
This question was asked many times. One day I thought I should make a research. Generally जब भी करते हैं जब client आता है, क्योंकि time बाकी मिलता है, time मिलता है तो बस ऐसे ही आ गए आप लोगों के साथ कुछ संवाद किया, बातचीत किया, कहीं बैठ के। मेरे को थोड़ा सा क्या रहता है, मैं GST जब से आया, मैं बहुत सारी स्पीच में बोला, मैं सबसे कम पढ़ता हूँ, लोगों को विश्वास नहीं आता। मैंने कहा बस वैसे फ्लाइट में थोड़ा सा बुक लेके बैठे रहते हैं, उसी में से पढ़ के बना लेते हैं, उतना ही चाहिए बस, लोगों को विश्वास नहीं आता। रियली मैं सबसे कम पढ़ता हूँ, मैं आपके डॉक्यूमेंट ज्यादा पढ़ता हूँ, आपका केस मेटेरियल आ जाए उसको स्टडी ज्यादा। मेरे फ्रेंड है, 2 फ्रेंड मेरे हाईकोर्ट के जजेस हैं, 2 डिफरेंट हाईकोर्ट। अब एक he was heading division bench and handled income tax cases for more than 1 year, जबकि उनको इनकम टैक्स कभी पता ही नहीं था क्या। इस थ्रू you can't point out anything, अब उनको समझ आ गया देश पे एक ही होता है। इसी तरह माय अदर फ्रेंड, उनसे अभी चार्टर्ड अकाउंटेंट की आरआरसी हुई तो उनको चीफ गेस्ट बुलाया, तो उनसे क्वेश्चन पूछा है, तो सर आप एक बताओ, आप इंटरनेट टेस्ट की प्रैक्टिस करते हो, अब दूसरे लोगों को कैसे, मुझको इतना अच्छा लग रहा है, मैं विश्वास नहीं करता, इंटरनेट टैक्स में इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। आप समझ गए, once you go in that, you know, आप किसी की चीज को चेरिश करने लग जाते हो, आई एम श्योर यू एंजॉय इट। आपको लगता होगा मैं इंटरनेट टेस्ट की प्रैक्टिस करता हूं, मैंने इंटरनेट टेस्ट के अलावा बहुत सारे केसेस, बस एक ही रहता है, सीट जरूर हो, ये तो पहले दिन से रहा है। मैंने इंडिया की बिगेस्ट टेलीकॉम कंपनी के अगेंस्ट केस किया, क्रिमिनल केस, एफआईआर फाइल 1999, जिनके लॉयर इंडिया के सबसे बेहतरीन लॉयर सक्सीड नहीं कर पाया। आखिर में मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा मेरी इतनी प्रैक्टिस हो गई। अब मैंने जज को ही कहा, मैंने कहा छोड़ो सर, अब मैंने तो मेरा काम कर दिया, अब आपको जो करना है करिए। They were doing defrauding the public at large। इतनी बड़ी कंपनी के लिए एफआईआर करवाना इज नॉट इजी टास्क, आप समझ रहे हो ना। वो भी मेरे जैसे बंदे के पास 1999 में, समझ गए, ये कह के उस आईपीएस ऑफिसर को मैंने कहा आप एफआईआर नहीं कर रहे तो पहले आपको जेल में डलवाऊंगा, उनको बाद ये उनके मुंह में बोल गए, तुम्हारा काम जजमेंट पास करना है, तुम्हारा काम है कि इसको रजिस्टर करके इन्वेस्टिगेट। तो एक आपकी विल होनी चाहिए, और विल भी वही, मतलब आप खुद फुली चेरिश करें। ये पॉइंट आपको लगा, तो अभी ये जो पॉइंट है प्रोविजंस का, इसमें देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है सबसेक्शन 10 के अंदर, the provision of section 165 of CRPC as far as possible will apply to the search conducted under GST law also. Only change is that the word magistrate will be substituted with the word commissioner. अब सेक्शन 165 देखें, शायद नेक्स्ट स्लाइड हो, ये 165 says of CRPC, search can be conducted when the police officer record in writing that there is no other means other than a search I can procure that means। आपने देखा उसमें लिखा है जब डॉक्यूमेंट वगैरह सीक्रेट करते हो, लिंक वगैरह, तभी वो सर्च करे। तो ऐसे तो बैलेंस शीट लेके जाता है, लिख के जाता है, वो तो कहता है कि GST 1 लेके चला गया मैं, जो कंप्यूटर में छुपी हुई है उसको भी ले जाता है, प्रिंट आउट निकलवा 26 AS बैंक स्टेटमेंट लेके जाता है। तो इसलिए लेके जाता है कि अगर आप सर्च करके खाली हाथ चले गए तो बोला कि क्या बेइज्जती नहीं होगी, तो बोला ले चलो एक बोरा भर, कोई पूछने वाला नहीं है। पब्लिक सेक्टर कंपनी को नोटिस आते हैं, मेरे पास ध्यान है एक हरियाणा में HIDC वो है, जैसे DDA है, उड्डा है, ऐसे ही। तो एक बार मेरे पास आए कई 10 साल पहले, आप क्यों आओ, उसने तो सिंपली आपको सम्मन दिया, बैंक स्टेटमेंट लेके आओ पिछले 5-10 साल की ले आओ। तो 27 से 32 बैंक, 10 साल का मतलब 1-2 ट्रक भरने पड़ेंगे नहीं। तो मैंने कहा उसने भी इसलिए मूंगफली खानी है और इसको बेच के और क्या करेंगे, बैंक स्टेटमेंट कभी कोई मंगाता है क्या, उसमें क्या मिलेगा। मतलब एक इनकम टैक्स में और GST में मैंने फर्क है, या पहले एक्साइज या सर्विस टैक्स का, इनकम टैक्स में अनरिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन के ऊपर जाते हैं, या जैसे वो
बेनामी कंपनीज ये वो कैश इधर से उधर शेयर कैपिटल वगैरह किया, नो, ये रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शंस पे जाते हैं, अनरिकॉर्डेड पे नहीं जाते। मैंने 100 करोड़ की सेल की उस पे नहीं बोला, जितना जाके 10 करोड़ की सेल दिखा के 5% टैक्स मिले, 10% हो। इक्विटी ट्रांजेक्शन को ही कहते हैं नहीं सबवेंशन, इक्विटी ट्रांजेक्शन को सबवेंशन, रिटर्न में जो दिखा दिया उसको सबवेंशन है। पता नहीं भाई, मैंने कहा आपका दिमाग कैसे चलता है, मेरे को समझ ही नहीं आया। फिर मैंने कहा बिना छुपाए क्या होता है, ये ना ये सबवेंशन है, सब कुछ रिटर्न में दिखा दिया, बुक्स में दिखा दिया, ऑडिट करवा दिया, ये सबवेंशन है। फिर असली वाला सबवेंशन कौन सा होता है, या बिना सबवेंशन क्या होता है, वो डिफरेंस थी। तो 165 यू रीड इट, एक मैंने यूपी का जजमेंट भी लगाया इलाहाबाद हाई कोर्ट का, तो सच ही नहीं रही, इफ यू हैव नॉट फॉलोड द प्रोसीजर अंडर 165, same provision which they have inserted in the GST was there in the central excise. And if you read 165(5), the copies of any record made under subsection 1 or 3 shall forthwith be furnished on an application free of cost. तो आप एक एप्लीकेशन लगाओ कमिश्नर के पास अंडर सेक्शन 6710, रीड दिस सेक्शन 165 ऑफ सीआरपी। पहले वो सोचेगा ये कहां से पढ़ के आ गया, हम तो दिखा नहीं सकते। अब उनको ये लगता है कुछ दिखाना नहीं चाहिए। आजकल भैया आरटीआई का जमाना, आप तो सब कुछ ही दिखाना, छुपाना कुछ है ही नहीं, आजकल तो सब कुछ पोर्टल पे डालना है। आप उस 22 वाला वो पढ़िए, जो अब मैं थोड़ा डिफरेंट ढंग से पढ़ता हूँ, पढ़ा तो आपने भी है, हमारा थोड़ा सा डिफरेंट नजरिया लगता है, नहीं हनुमान चालीसा बांच के फिर पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ है कि summons are being issued routinely to see GST return which are put on portal। तो उसके बाद क्या लिखा हुआ है, to try to avoid, ये नहीं लिखा हुआ मुंह में नहीं होता, दोनों में फर्क है क्या नहीं, have you understood it? avoid क्या होता है, जीएसटी पोर्टल बनाया किसी में तो समझ नहीं आया। आई कैन रिमेम्बर, मेरी 7-8 साल पहले की बात है, जानने की कंपनी का हमने एक लेटर लिखा कमिश्नर को, यहाँ उन्होंने लिख दिया कि हमें ये एक्सेस करने का राइट नहीं है, ये ऐसा तो तुम्हें, अगर तुम्हारी गवर्नमेंट है तो तुम्हारा अगर बोर्ड है, उसने तुम्हारी मेरी रिटर्न देखने का अधिकार नहीं दिया, तो मेरे को इन्वेस्टिगेट करने का अधिकार कैसे मिल गया? हैव यू अंडरस्टूड इट? मैं समझ नहीं पाता हूँ ऑफिसर्स को कि वो हाउ दे कैन ट्राई टू अवॉइड इट। यू राइट, यू कैन नेवर आस्क, दैट इज द डिजिटल इंडिया। आपका मेल आता है तो नीचे का थी स्वाइप बिफोर टेकिंग प्रिंट आउट एनवायरनमेंट और ये उसको मेरे से उसी चीज का प्रिंट आउट निकलवा के बुला रहा है। नहीं अगर मैं झूठ बोल रहा हूं तो बताएं ये सच है कि नहीं, लेकिन आई एम सॉरी, हम प्रोफेशनल्स भी कहते धीरे धीरे। आई कैन रिमेम्बर इंटरकॉन्टिनेंटल कंपनी, जिसका एक केस मेरा बड़ा फेमस भी हुआ, हाँ उसके अलावा भी मैंने केस किया ना, थोड़ा सोचते हैं कि मित्तल साहब के पास ना है, मित्तल साहब थोड़े सख्त है, सख्त मेरे लिए कैसे, मैं तो आपका बेनिफिट करने आया, आज जितनी बातें बता रहा ये ऑफिस में सुनोगे तो बिना जाएगा। लेकिन बात वही कहता हूं मैं, ऐसा नहीं हो सकता ऑफिस में कुछ बात है, यहाँ पे कुछ बात है, घुमरा कर रहा है, ये मेरे नियत में है। हम तो दूसरे नरेंद्र मोदी की तरह कुछ करने की तमन्ना लेके आए हैं, वही कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ऑफिसर मेरा क्या करेगा, मुझे किससे लड़ेगा भाई। मैं बात सच कह रहा हूँ, मैं कुछ ऐसी क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा, मैं इस देश का बात हूँ भाई, अपने देश को निकल दिखाने के लिए ढूंढ आया है। मैं ये कहता हूँ टैक्स चोरी की है और टैक्स डिस्प्यूट से उसमें फर्क करना सीखो। मैंने कोविड में एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का फोन आया इंदौर से कि अरेस्ट हो गया, कोई ये ऐसा हो गया है, और वो कह रहे हैं कि नहीं ये जो सैनिटाइजर है बोला क्या एल्कोहल का रेट लगेगा, पता नहीं क्या हो। अरे इससे कोई अरेस्ट कर सकता है क्या? उसने कोई चोरी थोड़ी की है। आपका रेट ऑफ डिफरेंस क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट है तो दुनिया में चलते रहेगा भाई, उसके लिए अरेस्ट क्या करनी है। मैंने तो साइकिल को कार को बदल नहीं, कार को बदल नहीं है,
आप कहते हैं नहीं ये 4 कहीं होगी इसमें 5 स्टेप नहीं क्यों लगाई कैसे लगाई है ये एसयूवी है ये जैसे पहले वाले करते थे एसयूवी वाले पे डबल टैक्स कार वाले पे बड़ा सेडान वाले पे टैक्स कम है जब कोई डिफरेंस नहीं था जब से टोल टैक्स लगा मतलब टोल वाले बड़े परेशान और चोरी कैसे कर सब रिकॉर्ड हुआ पहले तो 10 मिनट निकल गए बता के गाड़ी आ रही क्योंकि सेव है ना नचेगी का अब कैसे चोरी कर नहीं जीएसटी में हो रहा अब सब कुछ टोटल में कैसे करेंगे कितने देना ये दिन बात नहीं है चेंज करना है ये को दिया और ये सेक्शन इसका यूज करेंगे आप देखो 2-3 तरीके से मैंने अपनी लाइफ में हाउ टू टेन द ऑफिसर्स कभी कभी आपको अपनी क्वालिफिकेशन का यूज करना चाहिए मिस यूज नहीं देखिए और आपको रिप्रेजेंटेटिव है अपने क्लाइंट एक एडवोकेट क्यों नहीं करता कोई सपोज किसी ने मर्डर किया कोई हमारे पास आ गया उसका केस कर तो मर्डर किया तो फांसी किसी को लगी तो हो गई तो आप छुट रखते हैं चल आपको थोड़ी कहेगा आपको थोड़ी डाल सकते हैं उसने मर्डर के लिए आप क्यों आ गए तो लॉबी कितना है उसको कितने सामने आएंगे तो दूसरा एडवोकेट दिल्ली में देना पड़ेगा उसको नहीं देना पड़ेगा फ्री लीगल नहीं और बिना एडवोकेट के काफी मैसेज छूट जाएगा तो आप चाहे चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं चाहे एडवोकेट्स हैं अपने क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो आपसे बकवासबाजी नहीं कर सकता आपसे बकवासबाजी करके उसको बताया माइंड कर लेंगे आई विल राइट इमीडिएटली लेटर कि आपने ये बोलो उसकी फाइल खुल जाएगी फिर फाइल सबकी खुलती है तो ही शुड अंडरस्टैंड ही हैज मेड आउट द केस अब प्रोसेस चलेगा जैसे कोर्ट में केस आएगा तो ऑफिसर थोड़ी कोर्ट में आर्ग्यू करता है एडवोकेट ही करता है नहीं उसका भी एडवोकेट करता है उसके क्लाइंट का भी एडवोकेट ही करता है जो भी कोर्ट का फैसला आएगा वही आएगा अभी मैंने एक जजमेंट पढ़ा है कि इतना ब्यूटीफुल जजमेंट शायद पटना हाई कोर्ट का कि एंटरटेनमेंट टैक्स जो लगता है वो जीएसटी नहीं लग सकता उसको मैंने कहा उस जजमेंट को यूज करेंगे मतलब वो गहराई से पढ़ेंगे मतलब मैं मतलब रियली mind opening होता है sometimes you read a judgment something different come out which nobody ever thought about so this is the also very important point now let's go to the ऐसे तो बहुत कुछ है but I don't want to go everything एक मेरे फ्रेंड ने पूछा कि सेक्शन 129 पे आते हैं मैंने कुछ लिखा है पहले उस पर डिस्कस करते हैं फिर इससे पहले जस्ट अब देखिए जो मैंने इस सेक्शन में 2 चीजें अभी आपने देखा शायद 2 साल पहले सेक्शन रीड्राफ्ट हुआ या सिग्निफिकेंट चेंज आया एंड अर्लियर आई वाज थिंकिंग दिस सेक्शन वाज टोटली रॉन्ग दिस सेक्शन वाज सेइंग you want your conveyance was detained and stopped you have to pay tax and then you have to pay penalty this section was to my opinion was totally illegal unconstitutional because you can demand a tax on supply you can't demand a tax when you're just carrying goods so suppose I have sold a goods A has sold a goods to the B you understand the previous point so that you can understand now also A to B he has paid the tax yeah he will paying the tax after 1 month or so but if goods is stopped suppose he was not carrying maybe something wrong and something he has to pay again tax if the GST law was convinced to pay multiple point tax answer is no now they probably understood their things were illegal they said now you have to pay 200% penalty penalty could be 500% आप सीधा इसके लिंक को जो भी माल लेके जाएगा फांसी लगेगी वो बात अलग है कि वो रिजनेबल है या नहीं उसको कोई चैलेंज करेगा to demand a tax was contrary to the section 9 of the GST Act which says supply the second point which somebody because I don't do any procedural things तो बहुत सारी चीजें पता नहीं होती कुछ करेक्ट करनी पड़ती इंफॉर्मेशन टू अंडरस्टैंड थिंग्स तो one that was showing one of my previous junior was discussing with me from Delhi to somewhere else and Jaipur was to store and the officer was saying you take a registration here
You take a registration here and you pay the tax. नहीं लगता टाइम हो गया कभी कहते हैं चाय नहीं पिलानी हो तो दिल्ली में कहते हैं नाना की हड्डी की चाय ले लो तो नाना की हड्डी के बदला चाय मत ले जाना तो बोले कि स्पीकर का ना रुके तो उसकी बैटरी खत्म कर another point writes 129 so the tax would be demanded like it is written any persons like this. The question arises when the truck was detained at Jaipur, he said to take registration here and pay the tax. If this section is drafted in a manner, do we think there is no question of jurisdiction? और फिर समझ गए वो दिल्ली से अगर बॉम्बे जा रहा है अगर जयपुर में रुकता है फिर थोड़ा गुजरात में रुकेंगे फिर तो कई बार टैक्स लग जाएगा कई बार पेनल्टी लग जाएगी and how he will take a registration? सबसे बड़ा प्रॉब्लम ही तो रजिस्ट्रेशन का है हिंदुस्तान पेन लेना हो तो 60 रुपए ले लेता है और एक बार मिल जाता है कभी कैंसिल ही नहीं होता बनने के बाद और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना इतना टफ है मिल जाए तो उसका कैंसिलेशन शुरू हो जाता है हर तीसरे दिन नोटिस आता है तो भी कैंसिल क्यों करते हो रजिस्ट्रेशन मैं हर कॉन्फ्रेंस में कहता हूँ कि मेरा अकाउंट अगर किसी कोर्ट में हो मैंने ये प्रोविजन चैलेंज पे गुजरा था इनको तो एफिडेविट फाइल करके कहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल नहीं कर रहे हैं प्रोविजन क्यों चैलेंज कर रहे हैं क्योंकि उनकी दुकान ही बंद हो जाएगी अगर प्रोविजन ही अल्ट्रा वायरस हो गया आई एम श्योर इट इज टोटली अल्ट्रा वायरस अगर आप बहुत सारे इसके प्रोविजन पढ़ेंगे मैंने तो सुना ही नहीं मतलब आई कांट इमेजिन एक होता है कि जैसे किसी को जेल में कन्विक्ट हो गया उसके बाद उसका पासपोर्ट ले जाओ उसका राशन कार्ड ले जाओ या उसका किसी का नहीं लेके जाते वैसे मैं बहुत सारे ऐसे जानता हूं जो लोग कन्विक्ट होके आप भी जानते हैं जो देश के मुख्यमंत्री रहे कई प्रांतों में जेल काट के आए हैं कन्विक्शन के बाद कह रहा हूं मैं उसकी बात नहीं कर रहा कि जो प्री कन्विक्शन अरेस्ट होता है उनका किसी का पासपोर्ट कैंसिल नहीं होता उनका तो शायद पासपोर्ट रखते भी नहीं है ना उनका पैन नंबर कैंसिल होता है ये जीएसटी रजिस्ट्रेशन कैंसिल करके पता नहीं क्या प्रॉफिट है Therefore, if you understand this provision, किसको नोटिस दे रहा है वो ट्रक वाले को नोटिस थमा दे ट्रक ड्राइवर है वो ओनर नहीं है ना तो वो कन्वेंस का ओनर है ना वो पढ़ा लिखा है आई थिंक द कोर्ट हैज टू वर्क अपॉन दीस थिंग्स अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि मेंस भी लगते हैं अभी मैं कुछ दिन पहले यहाँ था खाली धनवर जी कहते हैं हमने सेक्शन 129 में मेंस दिया नहीं लिखा क्वेश्चन ये नहीं लिखा हुआ कि नहीं क्वेश्चन ये कि यू आर लेविंग अ पेनल्टी और उससे भी बड़ा मेरा क्वेश्चन है आप पेनल्टी लगा रहे 200%। मेरे को अभी भी लगता है सेक्शन बिल्कुल गलत है मैं एक बार एक एडवोकेट से जैसे मेरा नंबर नहीं आ रहा था कोर्ट में तो मैं ऐसे कर रहा था मैंने कहा मेरे को लगता है सेक्शन में बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती है ठीक है सपोज करो अभी मैं यहाँ से उड़ीसा जा रहा हूँ रास्ते में किसने रोक लिया ट्रक वहीं पे वो कहता अभी जमा कर तो अभी मैंने बताया इतना भी बड़ा जो चोर हो उसको तो आप कहते हैं कि कोर्ट विल टेक इट्स ओन कोर्स वो वहीं पे अरे वो मेरा गुड्स डिटेन कर उसमें लिखा डिटेन एंड रिलीज आफ्टर पेमेंट अब सपोज मैंने वो पेमेंट भी कर दी दिस पेमेंट हैज टू बी टेम्परेरी पेमेंट लेकिन मेरे को लगता नहीं कि इसमें प्रोसीजर दिया हुआ है ऐसा कि आपको सोबत नोटिस आएगा आपकी हियरिंग होगी आपका ये होगा उसका ट्रक तो वही रोका हुआ है उसको चैलेंज है पेनल्टी कब लगनी चाहिए पहले सो को जाए फिर हियरिंग हो फिर मैं अपने कटौती में चैलेंज करूंगा मेरे ख्याल 1 सेक्शन में जो जमा कराने का प्री डिपॉजिट अगर सिर्फ पेनल्टी है तो उसका भी 10-20% तो 25% तो फिर मैं पूरे टैक्स जमा क्यों करा पूरी पेनल्टी क्यों जमा करा सपोज मैंने 500 करोड़ रुपए की जीएसटी चोरी की है लेट्स से मैंने बोर्ड नहीं लगाया तो व्हाट इज द लॉ वो सोकस देगा सोकस देने के बाद एडजुडिकेशन होएगा वो 500 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाएगा और 500 करोड़ रुपए का टैक्स लगाएगा उसके बाद मेरे को कितना जमा कराना है 10% तो बस 50 करोड़ रुपए जमा कराऊंगा फिर अपनी जब भी सुनी जाएगी
10 साल, 5 साल, 20 साल, 25 साल तक अपना हो जाएगा काम। तो जो बोर्ड लगा के चोरी कर रहा है 500 रुपए, उसको सिर्फ 10% जमा कराना, और सेकंड स्टेज पे भी 10 होगा शायद, तो चलो 20-30% एक में काम चल जाएगा। लेकिन इसको जो ट्रक हो गया 200%, उसके बाद क्या कोई प्रोसीजर है कि पैसा वापस देने का? वही अपील करेंगे। ऑर्डर होगा तो सर ये भी प्रैक्टिकल एक चैलेंज है कि अगर आप शोकॉस के बाद पेमेंट करते हो और ऑर्डर के पहले, तो आपको ऑर्डर वो लोग अपलोड नहीं करते, तो आप लीगली उसको पोर्टल पे अपील भी नहीं कर पाते हैं, फिर मैनुअल अपील करो, फिर उसका लड़ाई अलग करो। ये होना ही नहीं चाहिए। तो मैं लिया की तो बात बाद में आएगी, पहले तो एडजुडिकेशन प्रोसेस ही चलेगा भाई। इसका मतलब वो तो ये समझ रहे हैं सेक्शन में कि अगर ट्रक यहाँ सड़क पे रोक लिया, तो अभी जो ऑफिसर का था, अब वो ऑफिसर किस रैंक का है? तो कमिश्नर जाके खड़ा होता है क्या वहां पे? इंस्पेक्टर भी नहीं होता है। ऐसे ही कुछ 84 को भेज देते हैं, बाद में वो कह देते हैं। नहीं होना चाहिए हर चीजें। हम तो भाई पुलिस वाला भेजा है, पहले कहते हैं इसका फोटो खींचेंगे, जो आपने नहीं लगाया तो क्यों नहीं लगाया? क्योंकि क्या पता स्पेशल 26 बन रही हो टीचर। आप नहीं डाउट करते, मैं करता हूँ। पार्लियामेंट में हमला हुआ तो ये थोड़ी कह के हुआ था मैं आतंकवादी हूँ चलो हमला करना है, वो भी उसी ड्रेस में बन के जाते हैं। क्यों चेकिंग होती है? मैं जिस होटल में रुकता हूँ उसी होटल की गाड़ी होती है, फिर चेक करेंगे। आप समझिए, मेरी तो 10 बार चेकिंग होती है। एयरपोर्ट पे घुसते हैं, जब तक फ्लाइट में नहीं बैठते ना, मेरे को लगता है यहाँ से लेके जाना चाहिए। लेकिन इंडियन लोगों को चेकिंग करने की इतनी आदत है, अपना बोर्डिंग के बाद यही पे छपा हुआ, एक बार फिर टनल के इस ओर और टनल के उस ओर, एक टनल के बीच। फिर कहा मैं कई बार विस्तार वाले मतलब ऐसे खड़े रहता नहीं के बीच में। मैंने कहा क्या चेक कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं आप? बोला मेटल डिटेक्टर है, मेटल। मैंने कहा बेल्ट है, पैन है, बोला मैंने कहा फालतू भर्ती कर रखी है, मैं झाड़ू पोछा करवा लो इससे। इतनी चेकिंग नहीं होनी चाहिए। ये हो सकता है कि यू मे नॉट एग्री विद मी, आई एम वेरी श्योर। इतना माइंड में आपको हो गया तो आप कोई जीएसटी में हल है। I can remember in Hyderabad, immediately after the GST launch, I was addressing a conference with the principal commissioner came. He said, what is the most wonderful thing in GST we have done? We have removed the checkpost. After he went this speech, I said, मैंने कहा पहले एक ही जगह है, सबको पता था चेकिंग हो गया, इसको 100 रुपए देने। अब तो जगह जगह कहीं भी रोक देता है, कहीं भी रोक देगा। और यही हो रहा है। इतनी जजमेंट में पढ़ चुका हूँ कि ई-वे बिल एक्सपायर हो गया, उसका पंचर हो गया, अब उसको नहीं मिला। कहीं ये कोरोना की वजह से हो गया, कहीं किसानों ने धरना लगा रखा है, नहीं कहीं चट्टान फंस गई है, कहते हैं आपको बिजली बिल। हालांकि अब थोड़ी रिलैक्सेशन है, ये कुछ घंटे वगैरह की कुछ कर लो आप, ले लो। दूसरा भाई वो कौन सा चैप्टर हम बोला उससे कोई छुट्टी नहीं, वो ठीक कर लेगा, ऐसे कर लेगा। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये समझती है कि आप लोग कभी सोएंगे, और ऑफिसर हमेशा सोएंगे जब मर्जी आए, जब काम करेंगे। उनके ऊपर क्यों नहीं होता? एक बटन होना चाहिए। आज मैं किसी को बता रहा था कि जब मैं पहले ट्रैवल करता था, बोर्डिंग पास लेने के लिए 30 सेकंड लगते थे, 30 सेकंड। अब मेरे को बोर्डिंग पास घर से जनरेट करना है, लेकिन अगर लेडीज बड़ा पड़ गया तो 30 मिनट लगेंगे। आप नहीं समझते इसके पीछे क्या है, जो मैं समझता। इसके पीछे की उद्देश्य उसकी फ्लाइट मिस करानी है, आपकी नहीं तो आपके पीछे वालों की। कोई एक चेक नहीं होना चाहिए, इसको 30 सेकंड से ज्यादा क्यों लगे? कोई पूछ रहा है? पहले बैगेज रखने वाला एक बंदा अलग खड़ा होता था, वो लड़की जो वो देती थी स्लीप, वो उसको देती थी, वो लगाता था। वही सब काम करती है कि उसी के पल्ले लगाए गए ताकि 15-20 मिनट लग जाए तो अपने आप 2-4 रोएंगे। उनको ये फील नहीं हो रहा है कि वी आर डिससर्विसिंग टू देयर ओन कस्टमर्स। इसलिए मोदी जी ने दिल्ली जैसे में प्लान कर दिया, वो भारी लैंड रखते 1.5 किलोमीटर एयरपोर्ट पे। अब डीजी यात्रा शुरू कर रही है, बस अपना मोबाइल लगाओ चलो, ना वो पुलिस वाला देखेगा ना आपको दिखेगा। हमारे को खुद को ही नहीं दिखता कहाँ पे हमारा नाम है, सीट नंबर लिखा हो, उसको क्या दिखेगा? क्योंकि हर एक एयरलाइंस का अपना अपना सिस्टम है, कोई किसी का इन्फॉर्मेशन नहीं। देखो मैंने रिया टू माय माइंड वाज लैकिंग ए पेनल्टी, तो क्या आप अपने आप लगाते हो? आप धर्मेंद्र टेक्सटाइल का जजमेंट पढ़ेंगे, डिटेल जजमेंट, उसमें एक्साइज वगैरह इनकम टैक्स सब कवर। आप संजीव फैब्रिक का जजमेंट पढ़ें,
एन नंबर ऑफ जजमेंट आपको ऐसे भी मिलेगी, मेंस के रिपोर्ट नेसेसरी, इवन पुराने गवर्नमेंट भी मिलेंगे, लेकिन वो थोड़ी देर में वो जजमेंट नीचे दब जाता है, दूसरा जजमेंट आ जाता है। नहीं, तो मेंस ये जब आप पेनल्टी लगा देंगे मेरे ऊपर, तो आप क्यों आप इस लाइन को ढंग से पढ़ेंगे, उसमें क्या लिखा है, नोट दिस यानी कि कंटेन इन दिस एक्ट विद एनी पर्सन ट्रांसपोर्ट एनी गुड्स और स्टोर एनी गुड्स लिखा हुआ है, वो भी गुड्स नहीं लिखा हुआ है जो आपके इसी में आएगा। दिस इज दे आर राइटिंग दैट एनी गुड्स जो वायलेशन किया, दिस एक्ट मेड दिस सच गुड्स फॉर कन्वेंस यूज्ड फॉर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कैरिंग ऑफ द सेड गुड्स और डॉक्यूमेंट्स relating to such goods or conveyance shall be liable for detention. तो contravention of the provision of this act है। अब मैंने contravention किया कि नहीं किया, अब मेरे को नहीं पता, आप लोग बता सकते हैं जब ट्रक पकड़ा जाता है तो कौन डिसाइड करता है? वही इंस्पेक्टर जो आप बता रहे हो, मैं तो चौकासी बता रहा था, नहीं तो मान लो इंस्पेक्टर है, सुपरिटेंडेंट होगा, तो क्या उसको पावर है क्या? कहां लिखी हुई आप मेरे को बताएं, आपके पास सेक्शन 2 पढ़े, सेक्शन 3 के अंदर इंस्पेक्टर सुपरिटेंडेंट बॉडी नहीं, आप नोटिफिकेशन नंबर 2 पढ़े, उसमें वो है नहीं, लेकिन सारा काम वही कर रहे हैं। Can they do it? आप ये कह रहे हो प्रॉपर ऑफिसर करना चाहिए, अब वो ही फैसला करेगा कि कहां लिखा हुआ है। वो ट्रक को डिटेन कर सकता है, डिटेन करके वो मेरा केस बना सकता है, केस बना के आए कोई ऐसे केसेस के अंदर तो वो में लिखा होना चाहिए दिस केस विल बी डिसाइडेड इन लेस देन 24 आवर्स। जैसे हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी वार्ड होता है, ओपीडी होता है, उसका ट्रक ही रोक लिया, उसकी तो लाइफ अभी कलकत्ता हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस का डिसीजन है, बोला कि भाई इसकी तो व्हीकल ही डैमेज हो जाएगी, उसको किसने देनी है, महीने आप इसको डिटेन करके रखो, किस नहीं देगा, तो किस रिपोर्ट एक वो भी ले जाएगा इस व्हीकल को उठा के, उसके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी लग किसको जाएगी। ऐसे भी देखो जिस विभाग का सक्सेस रेट 5-10% है उसकी सजा का, मैं ये नहीं कह रहा टैक्स इवेजन नहीं होता इस कंट्री, टैक्स इवेजन होता है इसलिए सरकार बदली थी 2014, लेकिन टैक्स इवेजन होता है इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबको ही रोक दोगे। मेरा ये मानना है कि जो टैक्स इवेजन करने वाले उनकी तो डर ही नहीं है, इसमें तो काला धन बढ़ता ही चला जा रहा है स्विट्जरलैंड बैंक में, वो ऐसे ही थोड़ी चला जाता होगा कि जितना लेके गए आप देखते नहीं होंगे उनको। Therefore, ये जो प्रोविजन बना हुआ है इट मे नॉट बी रिटन कि क्या लिखा हुआ है, द कोर्ट हैज टू राइट डाउन इफ यू आर लेविंग सच ए हेवी पेनल्टी, फर्स्ट यू हैव टू मेक ए चार्ज, चार्ज के बाद हम प्रूव करेंगे ये नहीं ये चीज है ही। तो therefore 3-4 क्वेश्चन यू डिसाइड फॉर जुडिशियल ऑफिसर कौन है, क्या एवरी जब दिल्ली से कलकत्ता आएगा तो सारे जुडिशियल ऑफिसर आएगा, दिल्ली से लेकर कलकत्ता तक 5,000 ऑफिसर। Secondly, to whom you have to give a notice, tractor driver is the right person. Third, who will implement this? वो कह रहे हैं रजिस्ट्रेशन लोग नीचे अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे मिलेगा, वो कहते हैं आपका एड्रेस दिखाओ, मैं जयपुर में एड्रेस कैसे दिखाता हूँ, वो ट्रक जो होगा, मैं तो जयपुर रहता ही। जैसे मैंने क्वेश्चन पूछा जिसका आज तक आंसर नहीं मिला, हम तो बच गए इसलिए हमने वो सर्च करने की कोशिश नहीं की। एक बार एक बंदे की गुरुग्राम में सर्च, तो किसी ने एडवाइस किया मित्तल साहब के पास चले जाओ, तो गुरुग्राम के अंदर बीजेपी की गवर्नमेंट हरियाणा खट्टर साहब, और वो दिल्ली एडवाइस लेने आके केजरीवाल के पास। अब हमने एडवाइस कर दी कि चंडीगढ़ हाईकोर्ट में आपकी पिटीशन है। अब कितने स्टेट इन्वॉल्व हो गए? 3, हरियाणा, दिल्ली और चंडीगढ़, तीनों का अलग अलग जीएसटी। अब ये बताओ कि उसका जीएसटी जो मैंने उससे पैसे दिए उसका जीएसटी का भुगतान कहां होगा? हरियाणा वाला कह रहा है अगर मैं बिजनेस यहाँ करने नहीं देता तो मित्तल साहब तुम्हें क्लाइंट मिलता। केजरीवाल ये कह रहा है मित्तल साहब अगर आपको ऑफिस यहाँ नहीं खोल लेते तो आपको क्लाइंट मिलता। चंडीगढ़ वाला कह रहा है कि मेरी तो कोर्ट है यहाँ जीएसटी दे के जाओ। क्वेश्चन ये कि ये जो ट्रांजिट वाला प्रोविजन बनाया है आई थिंक सो हाफ बटे है। एक बदली तो सरकार ने मानी है कि वो टैक्स भी मांग रहे थे और पेनल्टी भी मांग रहे थे,
आप उन्होंने 200 कर दी पेनल्टी मांगी। प्रॉब्लम ये आती है कि आपका पहले से बिल्कुल से है, आपका शायद 129 में 130 भी डीलिंग करके। अब ये बताओ कि अगर किसी का ट्रक में माल रोक लेते हो, अब किससे बात करो? मेरी तो प्रॉब्लम है कि अगर सपोज आप बैंक में वीआईपी अकाउंट खोलो तो वही लड़की 10वीं क्लास वाली बात करे, आप एक टिकट ले लो तो वही 10 लाख पढ़े लिखी लड़की बात करो। कोई भी कंपनी ऐसी बताओ, आपने गाड़ी ले ली तो वही 10 लाख वाली बात करेगी। क्या आप 1 करोड़ रुपए की गाड़ी ले लेना, बात वही सिलेंडर की करनी पड़ती, कोई गिरावट नहीं होगी। आज मेरा ट्रक रोका है तो जो सड़क पे खड़ा हुआ है वो तो कमिश्नर नहीं है, तो सबसे लोएस्ट गिरावटी में आपके डिपार्टमेंट में कंसर्न बंदा बात करे ना। जैसे खाली संगठन ने बताया कि ट्रक रोका है, यहाँ पे मेरे पास तो बंदा है, ऐसे बोला एडवोकेट ने कहा कि भाई फ्राइडे सैटरडे कोर्ट बंद है, अभी सैटरडे संडे तो उनके पास चले जाओ। सैटरडे को बैठ के बोला गए, मैंने फोन किया कि भाई क्या कोई गड़बड़ है? गड़बड़ नहीं है, देख लेंगे अपना मिल जाए। ऐसे नहीं होता, देख लेंगे। ऐसे तो कोई ट्रक आगे नहीं चलेगा भाई, 10 किलोमीटर की लाइन में जाएगी। लो ये परमिट नहीं करता। लो ने क्या कहा? सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ असेसमेंट मींस यू बिलीव एवरी टैक्स पेयर इज ऑनेस्ट, देखो आप उसको परेशानी नहीं करेंगी। दैट मींस यू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फर्स्ट, यू हैव टू श्योर, देन ओनली यू फ्लैग डाउन। तभी मैंने कहा पुलिस वाले अरेस्ट नहीं करते थे, पुलिस वाले करने लगे तो रेलवे स्टेशन का गाड़ी पकड़ के कंपनी पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि चेक करें लो रिवर्स होता है, लेकिन यहाँ पे मिसयूज हो रहा है। देखो 149 का मेरे को लगता है कि ये जो प्रोविजन बनाया है उसका इतना अब्यूज हो रहा है, वो किसी के ट्रक को रोक नहीं। जितने जजमेंट रिपोर्ट होते हैं उसके हिसाब से तो ये लगता है 100% अब्यूज, क्योंकि जो एक्चुअल में टैक्स एग्जीक्यूटर्स होता है मेरे को लगता है उसकी सेटिंग है, या तो पैसे ही दे देता है तो 200% पेनल्टी है, 100% है। वो तो भाई दिल्ली के अंदर एक बार एक लड़का बिना टिकट के आता करता था, एक बार पकड़ा गया तो बोला नहीं 100 रुपये दे, मैंने ले लो इसमें का, मैंने तो कई लाख रुपए बचा रखे हैं, 10 लाख तो वो तो यही सोचता है मेरे 25 मिनट निकल गए, एक ट्रक में है 200% लग भी गई तो क्या फर्क पड़ेगा, वो तो बच जाएगा। दूसरा मेरा क्वेश्चन रहता है, सपोज ट्रक रोका 200% बस उसका केस खत्म हो जाता है नहीं। अगर सपोज मैंने एक माल ले जा रहा हूँ ट्रक के अंदर, मेरे पास करो क्योंकि मैं प्रोसीजर में नहीं गया और ऐसा केस नहीं आया तो डेप्थ में हम नहीं गए। सपोज मैंने जानबूझ के वॉल्यूशन का लॉ करके यहाँ से माल लेता, आपने पकड़ा ये गड़बड़ है, आपने 200% पेनल्टी के मेरे जमा करा, बस केस खत्म। मैं अपील कर सकता हूँ। नहीं नहीं है ना, मैं तो चोरी कर रहा हूँ, क्यों अपील इसका मतलब ये चोरी करने का तरीका बताया हुआ है। जैसे मैंने बताया कि ये जो आपने अपील का प्रोविजन बनाया है कि 10% जमा कराओ, जो टैक्स जो होता है उसके लिए बहुत बेनिफिट है, तो कहता 10% दे के मैं इतने लाखों करोड़, उसमें भी अपर लिमिट होगी, जैसे सर्विस सेक्टर में 500 इसमें अपर लिमिट है क्या? नहीं 10 करोड़ फ्री डिपॉजिट 10 करोड़ इंच 10 करोड़ के ऊपर नहीं है, तो सपोज मैंने 5,000 करोड़ की छोड़ी 10 करोड़ रुपए जमा करा दूं मैं तो ऐसे बैठा हूं। और अभी तो ये भी कहते हैं जब तक ट्राइब्यूनल ना बने, जब तक आप ऐसी बस करके छोड़ दो तो बनेगा, जब तक देख लेंगे तो जब तक हम भाग जाएंगे यहाँ से। ये टैक्स चोरी करने का तरीका नहीं है। अगर दूसरा तरीका लो, अगर आपकी फैक्ट्री में आके सर्च होती है और आपके ऊपर ये गड़बड़ पकड़ा गया तो आपको टैक्स पेनल्टी भी देनी है और फिर आपके ऊपर प्रोसिक्यूशन भी लॉन्च होएगा। ये तो बढ़िया सिस्टम है, यही नहीं करना चाहिए फिर जो टैक्स चोर। मेरे को लगता है कि सेक्शन इज टोटली मिसड्राफ्टेड और कई बार ये लगता है नहीं कि आपको बस पेनल्टी देनी है। जज साहब भी यही सोचते हैं, कोर्ट भी यही सोचती है कि नहीं 200% पेनल्टी है, मैं क्या कर सकता हूँ। हालांकि इसमें शायद ये लिखा हुआ है कि आपको इक्विवेलेंट कोई वो भी दे सकते हो, गारंटी वगैरह। हाँ, तो ये प्रोविजन तो इसलिए होना चाहिए कि एक बार मेरे को लगता है मैंने डिटेन किया, उससे कुछ अमाउंट जमा करा लें, जैसे उसमें 10-20% लिखा हुआ अपील में, ऐसी जमा करा के उसको ट्रक को छोड़ के फिर केस चले तब डिसाइड हो। वो तो मेरे को ही पता है, तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर सपोज करो कि 2 ट्रक जाने में ट्रक छोड़ूं, एक शरीफ वाला जाए, मेरा रोटी मैं तो 200% देने को तैयार हूँ, वो कह रहा मैं 200% में 20 रुपए नहीं दे सकता क्योंकि मैंने चोरी नहीं की। वो तो कहता गड़बड़, वो क्या मैंने ऐसे केस पढ़े हैं कि वो ये कहता है कि नहीं ये क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट, क्या क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट में ट्रक पकड़ सकता है? वायलेशन ऑफ द लॉ का मतलब है फुल प्रूफ हो गया है,
वायलेशन ऑफ लॉ वही होना चाहिए। और फिर ये भी सेक्शन बना रखा है माइनर ऑफेंसेस के लिए पेनल्टी नहीं लगेगी। अब ये हो गया, उसमें नंबर गलत हो गया, ये गलत हो गया, वैसे गलत हो गया, वो क्या करते हैं कि जैसे एक ने चोरी की, उसी चोर का एग्जांपल देके वो सबको ही बताते नहीं ऐसे होता, हम क्या करते हैं, लोग बिल्कुल डिफरेंट होता है। सपोज करो जैसे क्रिमिनल लॉ क्या है, वो कहते हैं 100 गुनाहगार से छूट जाए, लेकिन एक बिना बेगुनाह को सजा नहीं होनी चाहिए। तो इसी तरह यहाँ पे भी आप जो ट्रक में ऑनेस्टली माल लेके जा रहा है उसको हैरेस करते हो, तो जो डिसऑनेस्ट होता है वो बच ही जाता है, उसको तो देखो पेनल्टी देने को परेशानी नहीं है। मेरे को लगता है कि मेंस रिगार्ड इवन इफ इट इज नॉट रिटर्न, once you are levying such a huge penalties for violation of the law, that means you have to prove it. ये गिल्टी माइंड है उसका, इसीलिए तो लॉ को कोई भी लॉ पढ़ा जाता है एज अ होल पढ़ा। लॉ विल नॉट बी रीड इन आइसोलेशन, व्हाट इज द एंटायर कोड इज सेम। आपको माइनर पेनल्टीज के लिए नहीं करना, उनके सर्कुलर आएगा इस सेक्शन पे भी आया मैसेज। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स आई बिलीव इट इज नेसेसरी। अगर आप चाहते हो तो एक आध पॉइंट और है इससे प्रीवियस स्लाइड में आई कैन डू हो जाए, तो आपके क्वेश्चन है तो आई कैन टेक दोस क्वेश्चन। और पीछे नहीं इसी में समझ के अंदर एक पॉइंट है। नेक्स्ट, देखिए when someone can be issued, that is very important. Section 70, you read it very carefully. It says someone can be issued in any inquiry. Someone can be issued by the proper officer when he deemed necessary, and in any inquiry then he can issue someone to any person. ऑफिसर क्या समझता है, I can issue someone to any person. अब वो क्या कर रहा है, किसी एडवोकेट ने ओपिनियन दी तो उसको भी समन कर लेता है। एक डॉक्टर ने ये कह दिया कि he required bed rest, तो डॉक्टर को समन कर लेता है। How misuse is the power? और ये अनकॉमन नहीं है। इट इज नॉट लाइक दैट कि वो एक ही केस में किसी डॉक्टर को। आई वाज सरप्राइज्ड कि 3 जो गवर्नमेंट के ऑफिसर है, वन वाज द जॉइंट सेक्रेटरी, ही इज प्रैक्टिसिंग नाउ फॉर द लास्ट 20 years. One was the custom commissioner, he is practicing now and he is now the member of the tribunal. Another person was the DR. He is the practicing advocate now and sometimes the standing counsel for this department also. तीनों ने ओपिनियन दिया और तीनों को सुप्रीम समन इशू। तीनों ने सिफारिश लगाई, यार हम तो ये रहे हैं, और वो कमिश्नर को बोला तब जाके मामला सुलझा है। सिफारिश लगवानी पड़ती, क्योंकि वो तो एक पढ़ते हैं समन कैन बी इशूड टू एनी पर्सन। लॉ ये नहीं है एनी पर्सन, लॉ ये है someone can be issued when he consider necessary. Consider necessary means form an opinion on the basis of tangible material. Judgment इन्होंने पढ़ा, उसके अंदर बैंक अटैचमेंट का लिखा था tangible material. Opinion सिर्फ ये कहने से नहीं, इन्होंने स्टेटमेंट दे दी, उन्होंने स्टेटमेंट दे दी। Secondly, when in an inquiry and he feel his presence is necessary, इतने सारे safeguard हैं। Therefore, a second, what he can quote, the 2 things ध्यान रखना, समन सिर्फ 2 ही पर्पस के लिए, only documents or evidence to record a statement. अब 95% क्लाइंट्स को देखो, वो स्टेटमेंट क्या रिपोर्ट करते हैं कि नहीं आपने इस पे टैक्स नहीं दिया, आपने एग्जेम्पशन क्लेम कर ली, दिस सेक्शन एग्जेम्पशन नहीं मिलेगी, मामला मेरे को लगता है नहीं मिलेगी, फिर कहते हैं उन्होंने एडमिट किया नहीं मिलेगी। This is the interpretation of the law. This you cannot record in the statement. You read it very carefully. मेरे को लगता है आपको किसी में मिलेगा नहीं है सर। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने की बहुत लिमिटेशंस, और हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंसी में पर्टिकुलरली ये कमी है। हम प्रैक्टिकल अप्रोच पे ध्यान दें। हमारा सिलेबस जो है डेफिशिएंट, प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल बहुत है। 18 घंटे पढ़ने की आदत जरूर डलवा होती है, लेकिन ये नहीं बताते रिटर्न का फॉर्म कौन सा जाएगा इनकम टैक्स का। मेरे जमाने में ऐसा था, मेरे को नहीं पता, अब आगे अभी भी नहीं आया। फिर क्या है, डेफिशिएंट नहीं है। मेरे जमाने में फॉर्म नंबर 2 है, पता नहीं कितने सारे फॉर्म होते थे, कंपनी का अलग, पार्टनरशिप का अलग, इंडिविजुअल अलग, ये अलग,
वो फोन पहली बार देख लेते, आज तक देखे नहीं, इसलिए बन गए, अपनी रिटर्न तो कोई भर नहीं पाया, फिर ऑपरेशन करने चला तो फेल होना ही नहीं। एक डॉक्टर बन के हाथ की सर्जरी करेगा, उसको हाथ पर हाथ में लिखा है तो गलती करेगा ना। फिर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड अप्रोच होनी चाहिए। अब ये बताया नहीं जाता कहीं, आप रिमेम्बर करो अपने इस तरह की 50-100 कॉन्फ्रेंस अटेंड की होगी, स्टेटमेंट जब रिपोर्ट करते हैं आप बताएं अपने आप से, आपने अपने क्लाइंटों के केस खुद में वो लीगल स्टेटमेंट आपसे लिख पा रहा है। I can remember in 2007 around I tried a case in Delhi High Court. The man said, Mr. Mittal, your director admitted his motivation के exemption increase tax लगी। Okay, yes, statement आया case from report। मैंने कहा why would I decide? Not my director। अब मेरा डायरेक्टर, मैंने कहा आगे से ये स्टेटमेंट दे टैक्स कभी नहीं लगता, तो मान लो क्या? This is the question of law। आगे से आगे मिट्टू के ठीक है। Therefore, ये क्वेश्चन आपको बताना है कि क्या पूछ रहा है, एविडेंस ले सकता है। दैट मींस एक फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी होती है वो। इन्वेस्टिगेशन इज अ फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। इन्वेस्टिगेशन इज नॉट अ लीगल अथॉरिटी टू डिसाइड अ क्वेश्चन। लेकिन आप पूछो तो पहले दिन जब सर्च करता है, जो अभी काम माय डियर फ्रेंड संदीप ने कि वो ऑन द स्पॉट ही चेक लेके जाएगा, ऑन द स्पॉट ही पेमेंट कराएगा। व्हाट इज मेकिंग ए डिसीजन। दिल्ली हाई कोर्ट का जजमेंट है, जस्टिस मुरलीधर जी का पढ़ा, उन्होंने सीबीसी पर एप्रोच दिया, सेंट्रल लीगल कमीशन। बोला मेरे को तो दो सिचुएशन नजर आते थे। कोर्ट सेड दैट टू सिचुएशन, आइदर देयर वाज नो इवेजन ऑफ टैक्स बट ही डिड नॉट पे द मनी, दैट्स व्हाई यू सेड इवेजन, और देयर वाज इवेजन maybe 5000 crores, he paid the money, that's why he paid 50 crores। How on the spot you can decide? अरे भाई, जब कसाब का डिसाइड नहीं कर सकते, जो मार रहा है, तो इंदिरा गांधी का जाएगा, उसका बेटा डिसाइड नहीं कर पाया। सबको पता है कि इंदिरा गांधी को किसने मारा, तो वो रिपोर्ट कौन होता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, आप पढ़िए। उसी सर्कुलर को बोर्ड कमिश्नर बोर्ड का सर्कुलर, उसकी पावर है 10 लाख रुपए की डिसाइड, एप्लीकेशन 1000 रुपए। आप इसी में बात करें, आई तो जिसकी पावर मान लो 10 रुपए की, वो 1000 करोड़ रुपए की बात कर रहा है, तो कैसे उसकी बात को नजरअंदाज करो, क्योंकि उसकी पावर ही नहीं है। आप इस चीज को एवरी वर्ड्स यू हैव टू नोट डाउन योर माइंड, हाउ टू अप्लाई इट। मेरा थिंकिंग है, देखिए सिंपली स्पीकिंग, ऑफिसर को पावर नहीं है तो कुछ भी नहीं कर सकता है, लीगल प्रिंसिपल पे। अब आप कहोगे नहीं, बहुत से लोग कहते हैं आपको एडवोकेट हो, मैंने कहा ऐसा नहीं है कि मैं एडवोकेट मांगे पेट से एडवोकेट तो बहुत होती है। हाँ, उसको प्रिंसिपल, मैं एडवोकेट नहीं था 1999 में, तब मैंने वो एफआईआर कराई जो मैंने अभी बताया ना, टेलीकॉम टाइकोन के केस। आप करा के दिखाएं, आप एडवोकेट बन के करा के दिखा दें। क्वेश्चन ये नहीं है, वी आर डिस्कसिंग द लीगल लीगल प्रिंसिपल क्या है। लीगल प्रिंसिपल ये कि उस ऑफिसर्स को पावर है क्या नहीं, वो स्टेटमेंट रिपोर्ट कर सकता है, फैक्ट फाइंडिंग अथॉरिटी। अब वो आपकी पूछता पहले आपकी ग्रुप कंपनी कितनी है, आपका डायरेक्टर कौन है, आपका एमडी कौन है, उसका मोबाइल नंबर क्या है। ये मोबाइल नंबर का सिस्टम ही गलत है, ये रजिस्ट्रेशन के टाइम पे मोबाइल देते हैं, वो उसको दुखी करते हैं। ये चूंकि बैन, आप मेरे को फोन कर रहे हैं, किसलिए कर रहे हैं भाई? कोई भी चपरासी उठाता है, फोन कर देता है किसी भी बैंक का, और मैं एक्सपर्ट का बैंक से फोन करता, नौकरी नहीं करता, उसने नाम स्पेलिंग नहीं पता हो, जैसे वगैरह कोई भी फोन करता है, उसका आई कार्ड कोई नहीं देखेगा। हमारा आपको सब कुछ चाहिए, आपको यकीन नहीं आएगा, अभी मैं जस्ट हफ्ते पहले ही तिरुपति मंदिर में दर्शन करने का मौका मिला, वहां मेरी कुछ थी, तो बोला आपको दर्शन कराते हैं आपको, बहुत अच्छा है। तो पहले हमारा बोला आधार कार्ड चाहिए, उससे रजिस्ट्रेशन, वो भी 10,500 रुपए। अब अगले दिन दर्शन हो रहे हैं, तो दर्शन में जब चले गए तो बोले कि यहाँ पे आधार कार्ड, मैं तो आधार कार्ड नहीं गया, वो तो मोबाइल है, मोबाइल लेके नहीं जा सकते। बाईचांस दर्शन, लेकिन मेरे को एक क्वेश्चन मेरे दिमाग में आया, राइट यू रॉन्ग, कि जब आपने अपनी स्लिप काट के दी है, उसपे मेरा फोटो छपा हुआ है, वो आधार कार्ड के साथ है, फिर आपको आधार कार्ड भेजे, इसका मतलब आपको अपनी स्लिप पे ही भरोसा नहीं। आप समझ रहे हो? तो यहाँ पे यही सिस्टम होता है, एक बार फिर, और वहां पे लाइन लगी है किलोमीटर तक की, 10,000 वालों की तो लाइन ऐसी लगी हुई है
फ्री वालों की तो पता नहीं कैसे आ रहे नहीं। तो हमारे क्या कि हर चीज को डिले करने का मेरे को ऐसा लगता है, जब भी मैं विदेश यात्रा पे जाता हूँ बस एक चीज लगता है, बस एक ही, बस ऐसे ऐसे वो देखता रहता है लेडीज और जेंट्स को किसी का हाथ नहीं लगा। और यहाँ पे पंप को भी 2-4 बार ऐसे नहीं कर ले, उसको लगता है कि क्या कर अंदर कर नहीं, पूरा अपना वो जो लेके चिपका देता है। जब कोरोना था या नहीं था, सबके कीटाणु हमारे अंदर है। क्यों भाई आपने लकड़ी का डंडा लगाया इसके अंदर से आया उन्होंने, ये डंडा किस लिए लगाया ऐसे छोटी से? नहीं, आई वांट टू हैव अ डिग्री ऑन दैट प्लीज एक्टिंग तो जहां टाइम की वैल्यू हो। क्या है हमारे यहाँ देश में बात हुई ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो रही है, लेकिन रजिस्ट्रेशन लेने जाओ तो नाम याद आ जाए। जेटली साहब कह रहे थे कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, अगर आपको कंपनी बनानी है 1 घंटे में कंपनी बना के दिखाई थी उन्होंने, या 1 मिनट में सारा। तो कंपनी 1 घंटे में बन जाती है, जीएसटी का रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, जब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल रहे। आप सिस्टम को ऐसा डेवलप करो, आपके पास पावर है ना, मैंने अगर नकली रजिस्ट्रेशन लिया आपके पास पावर उसमें लिख तो फांसी लगाएंगे, लेकिन आप ये मान के चलोगे कि 100 के 100 ही नकली रजिस्ट्रेशन लेते हैं तो फिर आपकी ड्राफ्टिंग लोगों कर फिर सेल्फ असेसमेंट खत्म कर। और आपको लगता है कि इनका दुक्का नकली देते हैं, परसेंटेज की हासिल करेंगे 10,000 5,000 पे नहीं होता है, क्या करें 10,000 5,000 पे नहीं होता है कि 10,000 लोगों ने नकली रजिस्ट्रेशन लिया, तो आपको उधर लेके दिया होगा। क्वेश्चन ये कि जैसे जस्टिस चंद्रचूड़ की वर्ड में कोट कर रहा हूं ना, देयरफॉर यू हैव टू ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सबको रजिस्ट्रेशन फ्री मिलेगा, जैसे पैन नंबर मिलता है, जब बटन दबाओ ले लो। नकली लिया तो आपकी इतनी पावर क्या है, इतना काम कर सकते हो, सब काम कर सकते हो, कोई काम कर सकते हो, मतलब क्या नहीं कर सकते आप, उसको घेर के मारने के लिए आपको सारे प्रोविजन, तो आप करते हैं ना। आज नकली एडवोकेट की तो पकड़े जाते हैं कि नहीं, उसकी जांच आज तक चल रही है, पिछले 2015-16 से आज तक, पता नहीं कब कंप्लीट होगी। बार बार सर्टिफिकेट जमा कराओ, ये जमा कराओ, करते रहते हैं। अब करते हैं ना, अब डिग्री भी ऑनलाइन मिलने लगी, ताकि सिस्टम फुल प्रूफ होना चाहिए। Therefore, अगर आप ये देखोगे और एक इसमें और पॉइंट कि जब आपने ये कहा कि वो डॉक्यूमेंट मांग सकता, तो डॉक्यूमेंट में ध्यान रखना, दोज डॉक्यूमेंट विच आर इन योर पोजीशन एंड योर डॉक्यूमेंट्स, लेकिन वो क्या मांगता है आपसे, बैंक स्टेटमेंट। कौन जनरेट करता है बताएं, बैंक। तो फिर बैंक से क्यों नहीं मांगते, मेरे से कैसे मांग सकते हैं? सिर्फ वो स्टेटमेंट मेरी है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैंने जनरेट किया, बैंक ने किया, बैंक वालों से नहीं, उसकी वैल्यू तभी बनेगी अगर वो एविडेंस कैसे बन जाएगा, तो मैंने प्रिंट आउट निकाला है वो आपको दूंगा, ओरिजिनल सोर्स से लेना पड़ता है। अब वो 26A मांगता है आपसे, तो किसका बेटा है, किसने पैदा किया, भारत सरकार ने, उनके पोर्टल पे। मैंने सुना है, मतलब मैं पूछता रहता हूँ, आप बताएं, आप इनकम टैक्स की बिल्डिंग में बैठे, आप बनाते हैं क्या उसको, दूसरे का डाटा है वो फीड करता है और उसको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का पोर्टल पैदा करता है, वो है ना ओनर, उससे मांग। अब 3B 2A कौन जनरेट करता है, 2A वो जीएसटी का बेटा है, तो जीएसटी से मांगे, वो आपसे क्यों मांगता है और आप क्यों देते? ये प्रोसीजर में मतलब मेरे को समझ नहीं आता कि ऐसी चीज है, मेरे से मेरा डॉक्यूमेंट मांगे। अब मेरे पास ऐसे क्लाइंट है एमसीडी, दिल्ली में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, आपको शायद केस खत्म हो गया इलेक्शन से पहले, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर का मेरे पास फोन भी आया था कि उनके जितने दिल्ली में जो कूड़ा उठाते हैं उनको ठेका दिया हुआ है, ऐसा 1,000 करोड़ रुपए का जीएसटी। ऐसे कूड़ा उठाने की प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी पैसा उनको नहीं देते थे एमसीडी वाले को, तो वो महीना कूड़ा नहीं उठाते थे, अब वो जीएसटी वाले पीछे पड़ गए। अब उन्होंने क्या किया, एमसीडी से एग्रीमेंट की कॉपी देगी, फिर उस कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं उसकी कॉपी का एग्रीमेंट। तो दिमाग में कुछ गड़बड़ नहीं पता लगता है, वेरी ब्लैंक। अरे भाई कॉन्ट्रैक्ट की कॉपी तो मुझसे नहीं, मुझसे तो ले रहे हो, और एमसीडी का मेन सोर्स मैं तो कहीं नकली दे दूंगा, मान लो अपने एमसीडी से लेनी क्यों लेते हो, क्या दूसरी दुकान में बेच के, यू हैव टू थिंक अबाउट इट। और फिर कहते हैं जितने एग्रीमेंट है सबकी कॉपी लो, स्टैंडर्ड एग्रीमेंट होता है, तो सम टाइम पेपर कलेक्शन करने का चाव चढ़ता है, उससे आई बिलीव ऑफिसर की एब्सेंसी खत्म होती है।
मेरे पास कभी भी कोई क्लाइंट आता है ना, वो चिल्ला भर के लाता है, ठीक है, आप मेरे को स्टोरी सुनाते हो, फिर मैं बताऊंगा ये डॉक्यूमेंट मेरे को, ये नहीं कि आप इतना चिल्ला है तो सारा ही दे जाओ, ये करेंगे, उसका क्या काम? आपके अंदर इतनी विवेक होना चाहिए ना। आप अननेसेसरी ये भी दे दो, वो भी दे दो, फिर बस गलती में बेचना है, कलर है, वो दिखा देगा उसको। Don't collect so many documents, it spoil your time. Therefore, ये जो डॉक्यूमेंट मांग सकता है कि बी श्योर, क्यों कई बार आपको प्रत्येक करवाता है। मैंने अभी एक बड़ा संबंध में रिकंसिलिएशन लिखा, मैंने कहा रिकंसिलिएशन तो आप देते हो सेक्शन 35 में, उसको एनुअल रिटर्न के साथ कुछ नहीं, वो कह रहा है ऐसे रिकंसिलिएशन बनाओ, वैसे बनाओ, वैसे बनाओ। ये नहीं कहता सेक्शन 70 कि he is your master and you are his servant। इनकम टैक्स में शायद उल्टा चलन है, वो बना के देते रहते हैं, पता नहीं क्यों देते हैं, नहीं क्यों देते हैं, आप उसकी नुक्कड़ नहीं है ना, वो डॉक्यूमेंट इंक्वायरी, मेरे को नहीं पता इनकम टैक्स में प्रैक्टिस नहीं करता, मेरे पास सेक्शन आएगा तो मेरे उसको भी डिफरेंट है, कोई इंक्वायरी ऑफिसर वो मेरे सारे बिल ले जा सकता है। पर आजकल बिल भी किस लिए मांग रहे हैं, जब जीएसटी बना हर बिल की एंट्री होती है ना, उसमें 1 लाख बिल हो, 1 लाख की तो बिल ही कोई और दिया है, और बिल में क्या होता है, तो उसका बंदी का नाम सब कुछ आपने तो लिख दिया है अमाउंट तक, तो सब कुछ उसमें आ ही गया है। Therefore, you be very sure about it कि वो क्या मांग रहा है, क्या नहीं मांग रहा है। आपको लगता है कि कई बार ऑफेंडिंग है, लेकिन एक भी केस ऐसा बता दो जिसमें आपने जो मांगा वो सब कुछ दे दिया, तो फिर उसका शांत हुआ। मैं ये नहीं बता रहा, जो आप तो यूट्यूब पे भी अपलोड करोगे, लोग सुनते रहते हैं कि होता क्या है कि वो मांगता है, आप दे देते हो, फिर कुछ सेटिंग होती है, बस खत्म, तो फिर सेटिंग हो जाती है उसकी, तो वो 6 महीने वो सम्मान नहीं देता, वो मामला कट गया, 6 महीने बाद फिर आ जाता है। अभी एक बात आपके कमिश्नर साहब ने एक्सेप्ट की, खाली धनवर जी ने, मैंने उनको कहा कि आपने सेक्शन 73 और 74 का डिफरेंस देखा। 73 क्या लिखता है, तो when there is no suppression, when there is no misstatement, when there is no fraud। मैंने कहा जब आप खुद ही लिख रहे हो सेक्शन में, लेकिन आपको टाइम पीरियड, जब रिक्शा में जाते थे, साइकिल पे जाते थे, पैदल जाते थे, तब ये 6 महीने, अब इसका टाइम पीरियड 6 साल हो गया, क्योंकि 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ एनुअल रिटर्न। और 2017 के एनुअल रिटर्न का डेट क्या है, 2020 फरवरी 7 फरवरी 2020। अब 2020 से 3 साल, उसमें भी एक्सटेंशन करता जा रहा है, उसमें भी एक्सटेंशन करता जा रहा है। फिर मैंने कहा आपको इसमें रखना चाहिए 3 घंटे मिलेंगे, क्योंकि अब तो ऑनलाइन देख रहे हो, अब तो आपने सीसीटीवी कैमरे यहाँ लगा रखे सारी जगह, आप देख ही रहे हो मुंह में। तो जब नो सेपरेशन, नो फ्रॉड, नो ये चीज लिखी हुई है, तो क्या इसका टाइम पीरियड कम नहीं होना चाहिए? जब 6 महीने तो उस जमाने में था, जब आपके पास ना सीसीटीवी था, ना इंटरनेट था, ना कंप्यूटर था। अब तो आपके पास सब कुछ, बटन दबाते हो सब कुछ आ जाता है। तो 6 महीने का 6 घंटे हो जाना चाहिए, 6 दिन हो जाना चाहिए। Why you have increased the time? Therefore, ये प्रेजेंटेशन की बात है, और you present your point of view। ये जो मैंने अभी लास्ट में पॉइंट बताया, I succeed on this point. I said in the point, मैंने कहा मैं इनकम नोटिस मैं कुछ नहीं बना के देने वाला। इसमें लिखा हुआ है documents, documents means which is in my possession and my documents। इसमें ये नहीं लिख रखा कि आप ये बना के दोगे, सिर्फ गवर्नमेंट में डॉक्यूमेंट, क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा, जो आप मेरे को बनाने की डायरेक्शन दे रहे हो, इस तरह आप डॉक्यूमेंट नहीं मांग रहे, यू आर गिविंग ए एक्स्ट्रा एडिशनल डायरेक्शन टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। जब जज को लीगल कोई भी लीगल पॉइंट पे आ गया और लीगल आर्गुमेंट होगा, तो 1 मिनट में अप्रिशिएट करेगा। जज ने पूछा उस टाइम जब हम ये केस कर रहे थे, तो मित्तल साहब का बड़ा सिंपल पॉइंट, यू कैन आस्क ए डॉक्यूमेंट, यू कैन नॉट आस्क टू क्रिएट ए डॉक्यूमेंट। लो में काम लिखा हुआ, लो में क्या लिखा हुआ, हम तो इनकी सहूलियत के लिए हैं, बोला इनको सहूलियत होती है कोर्ट में क्यों आते नहीं? और डॉक्यूमेंट आप दे दोगे तो उनको पढ़ना नहीं आता, फिर पढ़ेगा तो आपसे कैलकुलेशन जब करवाते हैं, आप इसे लिखवाएंगे जीएसटी की चोरी, और आप इसे कैलकुलेशन करवा के फिर आप इसको बोलते हैं कि आपने। तो थैंक यू वेरी मच, आई एम श्योर आई हैव कवर्ड द पॉइंट्स व्हिच यू वांटेड टू हैव। थैंक यू सो मच।
Yeah. So, since we have a time restriction here, so we will just take maybe one or two questions. If there are any questions, we can take maybe one question, because we have a restriction on the timing here. So, it will take maybe If there's no query, I'll just have an observation. If there's no query. If there are any queries, or even for the online participants, if there is any query, you can also say. The chat box. So there are different set of practices in summer and search by the state authorities versus the central authorities. Like in Bengal, spot summary is a mandate thing when a state authority visits. Pay a visit, 67-1, 67-2 hardly matters. As rightly pointed by you, 1 is 1 and 2 is 2. Inspection and search cannot be taken lightly. But the spot summary, being in filing retraction, next morning is a different game. So why it is that the central department do not take this as an important document activity to make a spot summary, and State Department makes a point that they always issue a spot summary. That is only answer is that misuse of the power. Khalid Anwarji said ki, so far as my jurisdiction is concerned, there is a direction not to issue someone. If the state authorities are issuing someone, you take up with him. He's very plain and clear. He said abuse of power is not permitted in my jurisdiction at all. You point out any issue. You go and meet him directly, I'm sure he will take very serious action. He said, you tell me any instances of my jurisdiction. In West Bengal, state authorities are issuing summons. He said, आप सिर्फ letter issue करेंगे, summon issue नहीं करेंगे. Again, sir, repeated summons are getting issued. We are challenging as many instructions issued by them. They are putting anomalies. We are writing to the senior officers, but still anomalies and they were statement. They are asking not to produce but to prepare a document. Repeatedly, same summons issued 7 times, 8 times. This happens only to my mind. When no actions are being taken against the hearing officers, they will continue to practice it. Like मैंने अभी एक पूछा, the two professionals came. He said कि bill का कुछ केस था, बैंक ने है ना कोई ट्रांजेक्शन हुई होगी तो बैंक ने अकाउंट फ्रीज कर दी. I asked the question, आप लोग ये प्रैक्टिस क्यों करते हैं? बोला सब जगह करते हैं. मैंने कहा नहीं, there is a difference. एक जमाना था जब पकड़े नहीं जाते थे. अब हर रेड लाइट पे अगर कैमरा लग जाता है तो यू थिंक 10 times की वेदर आई शुड जंप ए रेड लाइट. अब स्पीड कैमरे लग गए. तो मैंने कहा दोनों में फर्क है. अब डिजिटल इंडिया का जमाना है. अब आपकी ट्रांजैक्शन चेंज नहीं होती. आपको सोचो रिटर्न चेंज कराते 100 करोड़ रुपए देके भी चेंज नहीं करा सकते आप. तो मैंने कहा अब जमाना अलग है. आप उसी इरा में नहीं जी सकते. तो अब ऑफिसर्स के अगेंस्ट क्या होता है? उन्होंने कहा 2007 में इंस्ट्रक्शन इशू हुई, हमने अब्यूज की कुछ नहीं हुआ. 2015 में हमने अब्यूज की कुछ नहीं हुआ. वो रिपीट कर दिया, हमारा कुछ होना ही नहीं है. तो यहाँ पे एक परिपाटी है. neither the court nor the government want to take action against their own officers. तो इसलिए होता है. तो उसमें आप जो कोर्ट में जाता है, जो कोई पॉइंट आउट कर देता है कहीं ना कहीं, तो हर जगह रहता है 2-4% लोगों को बस वो छोड़ देते हैं. भाई ये बार बार कंप्लेंट कर रहे हैं. आप कंप्लेंट करेंगे, अब इतनी होनी चाहिए. अब यही होता है कि क्लाइंट कहता है कंप्लेंट नहीं करेंगे, हम कहते हैं प्रैक्टिस करनी है, कंप्लेंट क्यों करें. ये अपना अपना थॉट प्रोसेस है. The section 129, let's say, is there. Circular 64 is a differentiation of minor errors versus major errors. So now let's say first appeal authority gives us that okay, 64 is applied, it is a minor breach, and penalty under 125 will be legible and 129 won't be legible. So now, as I want your opinion on this, sir, can 125 penalty, even if it is such a 10,000 rupees, can it be applied? So 125 no notice was there. He is not the proper officer. Sometimes I will say, suppose उसने 10,000 rupees penalty लगाया, अगर आप उसको challenge करेंगे, तो it will be adversely viewed against you sometimes. Though in your appeals there cannot be adverse decision against you. That is also settled law. So why you will go? Academically it is wrong. कि जिस सेक्शन में आपको अभी मैं केस कर रहा हूँ, बड़े अमाउंट का केस है, एपीआई कोर्ट में केस फाइल किया, उन्होंने सेक्शन 74 का केस बनाया और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी ने लिखा है, क्योंकि हमने दिल्ली हाई कोर्ट में रिट फाइल की हुई थी, हम तो बोला कि इन पे 74 लगता ही नहीं. तो उसने उसको 74 में तो कुछ किया नहीं, 73 में टैक्स कर दिया और दूसरे सेक्शन में किसी में 122 में या किसी में पेनल्टी लगा दी.
जिसका शोकोज ही नहीं, तो he can't travel beyond an allegation made in the शोकोज notice. That is a settled law. He cannot do it. Question from the end, the back at the back. Oh, PJ. Some of the issues regarding the client is, there was a seizure from the GST investigation bureau, the Bureau of Investigation, and they have seized some documents. But they haven't given any show cause notice or anything, but they are calling the client and asking for 15 lakh rupees for penalty. So should the client pay it and afterwards he can Let me put it differently. Under section 74, probably the penalty is the 15%. So that's why he is saying, क्योंकि उसमें notice देना ही नहीं है उसको. अगर आप at your own or at the instance of the officer, you deposit the amount, penalty, then the so-called shall not be issued. ये तो आपको decision लेना है, being an professionals, कि how the client interest is protected. और क्लाइंट को डिसाइड करना, तो अदरवाइज ही कैन बाउंड यू टू पे द पेनल्टी. वो तो उसलिए प्रोविजन है कि आप अपनी गलती को मान रहे हो और आप केस को चाहते ही नहीं आगे बढ़े. अगर आपको लगता है कि गलती नहीं है तो जस्ट इग्नोर दिस फोन कॉल तो कोई कर ही नहीं सकता वैसे. अगर प्रेशर की वजह से क्लाइंट पेमेंट कर दिया एंड उसके बाद आप उसका रिफंड क्लेम करें, आप तुरंत लेटर लिखें कि अंडर क्वेश्चन आई पेड दिस अमाउंट. क्योंकि मेरे को बताया गया है कि जो DRC 03 या क्या होता है उसको स्क्रॉल करोगे तो वॉलंटरी लिखा आता है, वो तो यही लिखता है वॉलंटरी, जबकि वॉलंटरी नहीं, अंडर प्रेशर है. तो आप उसका लेटर इमीडिएटली लिखें, उनके सीनियर ऑफिसर को लिखें कि हमारे से दबाव देके जमा कराए. और शोकॉज के एब्सेंस में जब डिमांड ही नहीं है तो फिर पेमेंट. So why there is no provision of under profession GST having that in a spike law? वो तो इम्प्लाइड ही होता है. कोई भी चीज नहीं लिखी हुई है. मैं आपको रियल बता रहा हूँ कि सर्विस टैक्स में रिवाइज रिटर्न का प्रोविजन नहीं था. तो अगर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर इंडस्ट्री वाले कहने लगे कि प्रोविजन डालो, तो मिस्टर आर शेखर जो उस टाइम ज्वाइंट सेक्रेटरी, मित्तल साहब जब हमने प्रोविजन लिखा ही नहीं है कुछ भी, तो रिवाइज रिटर्न आप कर लो, आपको कौन परेशान कर रहा है. फिर बहुत प्रेशर था तो कर दिया, फिर बोला वो 90 दिन थे वो कम है, फिर बढ़ा दो, फिर आप और प्रॉब्लम में आ गए. तो अंडर प्रोटेस्ट तो है ही ना. अगर कोई भी अभी भी हो ही रही है तो अंडर प्रोटेस्ट तो कि आपके ऊपर कोई अगर परेशानी में पैसे जमा कराना है, ये करना, तो अंडर प्रोटेस्ट ही है. वो कोई वॉलंटरी थोड़ी होता है. अब उन्होंने फॉर्म गलत बनाया हुआ है, उसके अंदर नहीं दिया हुआ है. लेकिन मेरे किसी क्लाइंट ने बताया नीचे हम बोला रिमार्क्स में लिखते हैं. अगर हम मैनुअल अपील लगाते हैं 10% प्री डिपॉजिट पे करनी है तो कोई और तरीका नहीं बचता, हम DRC से लगा देते हैं. तो क्या होता है प्री डिपॉजिट कैसे होता है मेरे को नहीं पता, कैसे करना पड़ता है. ठीक है, जब तक सब डिमांड ऑर्डर आता है ना तो आप उसके अगेंस्ट पेमेंट कर सकते हो. पर जब डिमांड भी ऑनलाइन नहीं है, कर रहे हो तो आप डिमांड का अगेंस्ट नहीं कर रहे हो, DRC से कर रहे हो, एक्सेप्ट हो रहा है. मतलब प्रिंसिपली वो मैनुअल कोई अपील नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, बोले हमारा प्रोविजन नहीं है, वो लड़ाई का बात है. इनकैपेसिटी ऑफ GSTN कैन नॉट बी हो रही है. GSTN पोर्टल का इनकैपेसिटी होने के बहुत सारा ऐसा डिस्प्यूट्स हो रहा है जो कभी डिस्प्यूट्स नहीं होना चाहिए. जैसे मैंने कितने सारे जजमेंट पढ़े कि वो अपील इसलिए डिसमिस हो गई कि आपने सर्टिफाइड कॉपी ऑर्डर की नहीं लगाई. ये प्रोविजन ही करप्शन को ब्रीड करने वाला है. मैं बता, आपने ऑर्डर पास किया, फ्री ऑफ कॉस्ट मेरे घर भेजेंगे सर्टिफाइड कॉपी, व्हाई आई शुड कम टू यू. ये तो लॉ में ही प्रोविजन होता है. इवन जो कन्विक्ट हो जाता है ना, जिसने मर्डर किया है, उसको भी सर्टिफाइड कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है. ये GST में क्या प्रोविजन डाला हुआ है कि आप सर्टिफाइड कॉपी अटैच करेंगे, फिर ऑनलाइन हो गया सब कुछ. मतलब कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं लगती. मेरे को लगता है कुछ हमारे जैसी एसोसिएशन जो बनी हुई है उनकी भी भागीदारी होती है. वो इतना ब्लंट बोले, सिर्फ फोटो खिंचवाने के चक्कर में नहीं रहना चाहिए. ये मेरा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है. फोटो के चक्कर में नहीं है कि आप लिखे और होता है. मैं बताता हूं, अभी मैंने हमारे एविएशन मिनिस्टर को एक चिट्ठी लिखी कि जो आपकी एयरलाइंस के अंदर बोर्डिंग स्टार्ट कर देते हैं बिफोर इवन एयरक्राफ्ट इज क्लीन, तो मोस्ट ऑफ द पीपल असेंबल्ड एट द वे ब्रिज. और वो जो एरो ब्रिज है उसकी लिमिटेड कैपेसिटी होती है. अभी मैं हैदराबाद से इंदौर जा रहा था, मैंने कहा ये अभी गिरेगा. आई वॉज वेरी श्योर, क्योंकि उसमें पूरा एयरक्राफ्ट ही खड़ा हो गया ऑलमोस्ट. तो मैंने चिट्ठी डाल दी. अब चिट्ठी का जवाब आया पूरा, और वो बिल्कुल सबके साइन है उस चिट्ठी पे, वो पूरी की पूरी डाल दी है मेरी ईमेल पे उन्होंने. और
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन को लिखा कि यू हैव टू टेक एक्शन, और अब मेरे को लगता है एक्शन स्टार्ट हो गया। जब भी मैं ट्रेवल करता हूँ दे स्टॉप इट बिफोर एरोब्रिज का जो हिलने वाला हिस्सा है उस पे नहीं, उस पे तभी स्टार्टिंग होनी चाहिए जब बोर्डिंग एक्चुअली स्टार्ट, क्योंकि उसकी लिमिटेड कैपेसिटी है। वो तो पूरी फैमिली खड़ी हो जाती है, वो घेरा बना के उसके 10 आदमी की जगह 200 खड़े होने के चक्कर में रहते हैं। हमारा भी रोल है, कुछ हम पॉइंट आउट करें, कुछ राइट आदमी को लिखें, लेकिन ये लिखते हुए डरना नहीं चाहिए कि मैं जा रहा हूं कल से तो सिंधिया जी ऑर्डर पास कर देंगे मित्तल साहब की फ्लाइट ही कैंसिल, इसको चढ़ने मत देना। इतना नहीं डरना चाहिए। आपका हृदय अगर क्लीन है, मेरे को तो आज तक देखो 5वीं क्लास से लेके आज तक जो भी चिट्ठी लिखी हुई है मेरे को तो सब में सफलता मिली। मेरे को तो लगता ही नहीं कि कोई असफल होता है। तो आप लिख के देखिए, आप लिखो कि ये क्यों होता है अपील के बारे में, कि भाई हमें सर्टिफाइड कॉपी चाहिए, वाई वी रिक्वायर। अभी देखो चंद्रचूड़ जी ने कहा है ना कि सारे ट्राइब्यूनल में भी ऑनलाइन अपील होनी चाहिए। क्यों इंटरेस्ट नहीं ले रहे ट्राइब्यूनल? सभी पुलिस स्टेशन में कैमरे लगने चाहिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया कि नहीं? सभी ऑफिसर्स चाहे किसी भी डिपार्टमेंट के हो, सभी कैमरे में स्टेटमेंट रिकॉर्ड करेंगे, और उस कैमरे की रिकॉर्डिंग भी रखनी है। जब आप एलिगेशन लगाएंगे तो रिकॉर्डिंग प्रिजर्व करनी है। लेकिन क्यों नहीं लगाते? दिल में काला किसके हुआ? हथकड़ी लगाना बंद किया सुप्रीम कोर्ट ने। तो संज्ञान तो लिया जाता है अपेक्स कोर्ट लेवल तक। अब इंप्लीमेंटेशन करने के, अब आप सोचो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इस सब जगह जाके बैठ के कैमरा देखेगा कि ये कैमरा चल रहा है कि नहीं, सब ड्यूटी हर एक जगह। अब जब इंडिया में सपोज आपके ऑफिस में 10 आदमी काम करते हैं, कोई काम ही नहीं करता ढंग से, तो फिर आप क्या करोगे? मैंने आप बताया ना स्पीच में, मैंने सबको ही हटा दिया, तो किसी का इंटरेस्ट ही नहीं है। बहुत विजिलेंट होके काम करना पड़ता है, बहुत विजिलेंट होके। अगर मैं कोई रिट पिटीशन फाइल करने की दूं तो 100% चांस है कि वो रिट पिटीशन सही नहीं फाइल होगी। कोई पेपर नहीं लगा होगा, कोई पेपर छूट गया होगा, कोई डबल लग गया होगा, किसी की नंबरिंग नहीं हुई। 90% चांस है। मेरी पूरी लाइफ का एक्सपीरियंस बताता हूं। अब कितना करेंगे भाई? तो आप जो बता रहे हो वो मैं डिस्प्यूट नहीं कर रहा, लेकिन करके देखो, सफलता मिलेगी मिलेगी। आप लिखो, मैंने डिन के बारे में लिखा फाइनेंस मिनिस्टर को, हुआ ना एक्शन। हाँ मेरे क्लाइंट जरूर चले गए, लेकिन वो चले नहीं गए क्योंकि उनको रिलीफ मिल गया। क्योंकि जब उस ऑफिसर की इंक्वायरी स्टार्ट होगी तो आपके अगेंस्ट क्या, वो तो पैसे लेने के लिए करता है इंक्वायरी। डिन नंबर का इतना बड़ा फ्रॉड है, बल्कि उन ऑफिसर को जेल हो जानी चाहिए थी अभी तक। मतलब अगर आपने एक ही नंबर के 10 नोट छाप दिए तो जेल होनी चाहिए कि नहीं? एक ही डिन नंबर सब पे छाप रखा है, वो तो फिट केस है जेल का। लेकिन हमने अपना लिखा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता था ना, तो मैं जीएसटी में आता हूं, पब्लिक के लिए लिखा है नहीं। तो कभी कभी लिखते रहते हैं, हर सब्जेक्ट पे लिखते हैं, बहुत मन करता है। मतलब मैं तो चाहता हूँ 2-4 जूनियर तो यही हो कि 1 घंटा डेली बैठ जाए तो ऐसे लिखवाते रहे कोई ना कोई सब्जेक्ट में। सर मेरा एक ऑब्जर्वेशन है आपके इसमें, आपको ऑब्जर्वेशन चाहिए। ई वे बिल के लिए आपने मतलब एक माइनर डिस्प्यूट के लिए सर्कुलर भी निकाला है, तो वहां पे कुछ 6 आइटम्स इंटर आलिया शब्द यूज करके लिखा, मतलब इंस्टेंस है और भी हो सकते हैं। अब उसमें कुछ एक आइटम ऑफिसर्स का दिमाग ऐसा हो गया कि ये 6 आइटम होगा तो फिर भी छोड़ देंगे, बट आपने ई वे बिल एक्सपायर हो गया एक दिन, आपने संगीन अपराध कर दिया, 200% पेनल्टी लेंगे। अब उसमें एक जो 6 ऑप्शन है माइनर पेनल्टी, उसमें है कि पिन कोड अगर आपका अलग है बट उसके कारण अगर ई वे बिल की एक वैलिडिटी चेंज नहीं हो रही है तो माइनर पकड़ेंगे। मतलब मेरे को माल कलकत्ता से दिल्ली आपके ऑफिस भेजना था और मैं गुड़गांव भेज रहा हूँ, गुड़गांव तो चलिए स्टेट अलग हो गया, दिल्ली में कोई दूसरी 20-25 किलोमीटर दूसरे क्लाइंट के पास वो माल ट्रक पकड़ा है, ई वे बिल की वैलिडिटी चेंज नहीं हो रही है, पर माल आपके जा रहा है, जहां पहुंच रहा है किसी और के, वो उनके लिए बड़ा अपराध नहीं। जमा पर्ची बिल ऐसे होती है, जमा पर्ची बोलते हैं ऐसे पकड़ते हैं। अब समझिए वो उसके लिए बड़ा अपराध नहीं है, बट आपके अगर मेरा पीएसयू से माल जा रहा है, रेलवे को माल जा रहा है, जो भी चीज हो रहा है उसमें बोलते नहीं 1-2 घंटे की बिल एक्सपायरी इज योर। ये तो देखो सब्जेक्टिव चीजें होती हैं। देखो इसका आंसर एक ही है, मोरल वैल्यू जब तक हमारी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी ना, कोई लोग कैन नॉट बी फुल प्रूफ लॉ। मैं तो सिंपली बता रहा हूँ यहाँ मोरल वैल्यू लॉ है। अभी मैं मेरे फ्रेंड से बात कर रहा था कि कलकत्ता में ट्रैफिक पुलिस मेरे को अच्छी लगती है दिल्ली पुलिस की बजाय। आप गूगल पे टाइप करें, ये हाईकोर्ट लिखती है दिल्ली हाईकोर्ट कि आप पेड़ के पीछे छुप के क्यों खड़े रहते हैं भाई, आप चालान करने के लिए एकदम पकड़ते हैं। मैंने कलकत्ता में नहीं देखा कि कोई पुलिस वाला पेड़ के पीछे छुपा हो, वो ट्रैफिक को कंट्रोल करते हैं इधर उधर। मैं तो हाईकोर्ट रोज ही जाता हूँ, वो सबसे बड़ा आपका इंटरसेक्शन है जिसमें 4-4 मिनट की रेड लाइट होती है। दिल्ली में ऐसा नहीं है, दिल्ली में कहीं भी पुलिस वाला मिलेगा ही नहीं, वो सिर्फ चालान काटने के चक्कर में मिलेगा, ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए नहीं मिलेगा। आप उसको 1000 फोन करोगे तो भी नहीं मिलेगा।
और आई एम श्योर मैं पिछले 1 महीने से सोच रहा हूँ मैं दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखूंगा कि आप अपने पुलिस वालों को ट्रैफिक पुलिस को यहाँ भेजें। तो ये एक वे है सोचने का। यही सोचो कि हमारा कंट्री में जितनी अनियमितता थी उसमें धीरे धीरे इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो आप वही करें। अब ये चीज का आंसर कोई नहीं दे सकता है, सब्जेक्टिव डिसीजन है। So with that, I think we'll have to close up because there's a timing thing. So I request Advocate Sandip Choraria to come on stage, and also President Sir and Secretary Ma'am to come on stage. We'll have the closing. We'll just close in maybe 1 minute, so because everybody will be interested. So 1 minute. So with this, we'll have a closing remarks from President Sir. Thank you everyone for attending this session, and my thanks goes to special thanks and say to Mittal sir and Sandip Choraria for covering this topic so interestingly and giving us various thoughts to ponder upon. And now I'll request Manjuman to Offer the vote of thanks. thanks and thank you very much. Yes, we'll share the momentum, sir. So may I request Chairman and Committee to share the momentum to Advocate J.K. Mittal, sir. So may I request Sandip Choraria to offer a momentum to Sandip Choraria. So over to you, Secretary Ma'am, for the vote of thanks. Thank you, Arupa. What to say about this sentence? Knowledge was unexplainable, everything, but the takeaway, main of the takeaway, I'm also of the same view as J.K. Mittal sir has said, we professionals do have a responsibility. It's the same boat we are sitting. The officers are sitting on the that side, we are in the this side. They are representing the department, we are representing our clients. So it's not that we, whenever they are questioning our integrity or our clients' integrity, we should not be countering them. We should be having a faith enough on ourselves, should be bold enough that if they are talking something which is beyond jurisdiction, beyond the limit, we should be countering immediately. Sir, talk sense. That is what I do myself. Many people may not like, but this is how I have taken a faith. This is my motto of my professional ethics, which I am carrying on. If we all decide doing like this, I can bet, or rather, I can see that future that this is going to change. I will humbly request all of you to be bold enough and countering the officers. Thank you so much. And I think before we- I think before we close, we could have a round of applause for Abhishek Kumar who's planned the entire thing. And also for all of you coming here. Basically today, in fact, many of the attendees did not come because today is the last day for administrative schemes, sir. So they said many of them were actually sending us estimates that, messages that we missed the session today because of the administrative scheme. So thank you very much for coming in spite of all your busy schedules, and hope to see you on the next week. Thank you very much.